Okay, so we'll come to the probiotics and prebiotics. So what are probiotics? So probiotics are there are different types of microorganisms which are taken through the food and which have a beneficial effect on our body. Okay, like we also need probiotics and prebiotics. आमे भी खाद्य रे probiotics और prebiotics नो जेमति कि आमे दही खाउचे दही रे को बैक्टीरिया अछि लैक्टोबैसिलस अच्छी राइट तो सेही भला बहुत फूड रे प्रोबायोटिक्स थाए प्रोबायोटिक्स माने कोन एगुडा होची माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम हेल्थ रे किछि तार बेनिफिट्स रहउची आइदर से माने डाइजेशन रे हेल्प करचंदी कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करिवारे हेल्प करचंदी और दे आर हेल्पिंग इन सम अदर पाथवे okay so probiotics are defined as the live microorganisms which when administered in the appropriate dose yield many health benefits to the host okay when they are injected into the host they will getting various types of benefits and these microorganisms can be what this can be bacteria like gram positive gram negative bacteria can be bacteriophage means virus that attack the bacteria is known as bacteriophage that includes yeast that includes microalgae ओके तो आमे फूड सहित एई प्रोबायोटिक्स गुडा को आमे मिसई कि तमे आम हेल्थ उपरे they have the benefits okay so these are different types of probiotics see bacteria gram negative bacteria table number 10.4 देखो gram negative bacteria cytobacter enterobacter okay vibrio species then rhozobacter aromonas species okay एई सब स्पेसीज जोड़ा कि आमे कोठी यूज करछे प्रोबायोटिक्स हिसाब रे यूज करछे आ तांकर काम कोन दे विल रिड्यूस पैथोजेन लोड ओके जदि आमे प्रोबायोटिक्स खाद्य रे नेबा आम बॉडी भीतर जो पैथोजेन ग्रो होची जदि हमकु किछि इन्फेक्शन होची तो से पैथोजेन को लोड को कमेबो माने पैथोजेन को मारिबो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स से माने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करंती बॉडी को इट आल्सो इंप्रूव्स द इम्यूनिटी एंड एनहांस तो volatile fatty acids ओके तो फैटी एसिड्स रो मेकानिज्म मेटाबॉलिज्म रे भी हेल्प करछंदी कोन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया when they are used as probiotics similarly gram negative bacteria various type of gram sorry these are gram negative bacteria before these are gram positive bacteria like bacillus athrobacter clostridium rhodococcus तो एगुडा होची ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तांकर काम कोन जदि हमें तांको प्रोबायोटिक्स हिसाब रे हम बॉडी रे इंजेक्ट करिवा इट एनहांस द इम्यूनिटी एंड stress tolerance it also enhances the feeding efficiency increases the blood quality it increases the survival rate तो एई सब डिफरेंट तांकर फंक्शन रहउची बॉडी रे कोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आमे ताकू बॉडी रो नॉर्मल फ्लोरा कहउचे ओके तो लाइक हमकु जेमति प्रोबायोटिक्स दरकार सेमति फिश मानको मध्ये आमे ड्यूरिंग एक्वाकल्चर आमे ताकू प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स आमे ताकू फीड करि परिबा so that mane food re mistake dei pare so that there will be good metabolism they will get the nutrient they will get the immunity okay so these are different types of yeast bacteriophage like podoviridae okay yeast like saccharomyces cerevisiae एगुडा सब yeast then microalga so एगुडा सब different types रो हमें probiotics use करि परिबा similarly prebiotics कोन these are not microorganism these are some compounds एगुडा किछि कंपाउंड्स केमिकल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो आमे फूड रे जदी मिसई कि आमे खाइबा देन दैट दे हैव सम हेल्थ बेनिफिट्स टू अस आमु किति हेल्थ को बेनिफिट्स होची तो सेगुडा कोन जेमिति कि ऑर्गेनिक एसिड्स प्रीबायोटिक्स रे ऑर्गेनिक एसिड्स आछी जेमिति कि एसिड लैक मोस लैक्टिक एसिड ओके तो आमे डोज केमति देबा 0.5 टू 1.5% जदी एसिड लैक देबा इट विल increase the growth body ro growth को increase करिवो then MOS lactic acid it will increase the increase villi of the intestine increase the villi of intestine माने villi रो काम कोन intestine रे villi रो काम होची it increases the surface area of intestine so that there will be more absorption of the food it increases the digestion capacity similarly lactic acid increase the body weight similarly different types of enzymes को भी हमें so probiotics and prebiotics माने generally microorganism और prebiotics होची किछि compounds whether organic or inorganic compounds हमें food रे मिसई के देले हम
बॉडी किसी बेनिफिट्स दउती तो आमे एक्वाकल्चर काहे केटा पढुचे आमे तले एक्वाकल्चर करूचे फिश को भी आमे ए सब प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स मिसेक जदी फूड सहित आमे देबा तांकर भी हेल्थ बेनिफिट्स रहइबो different type of enzymes like xylanase will increase the feeding efficiency vitamin E level and weight gain immunosaccharides different types of inulin arabinoxylan okay ତାଙ୍କର ସବୁ different activity ରହୁଛି they increase the phagocytic activity okay ମାନେ ଏଠି indirectly କୋଉଠି କି help କରୁଛି immunity ରେ help କରୁଛି okay ତ ଏଗୁଡା ସବୁ different types of prebiotics and probiotics that is administered in the during the feeding time in the aquaculture system. Next, coming to the fish health. Okay, so we read so many things. Okay, how we will be culturing the fish. Okay, what are the benefits we are getting? Okay, how we'll feed the fish, how to maintain their environment. Now, coming to the fish health. Like you are getting the disease ଯେମିତି ମଣିଷ ମାନେ disease ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ସେମିତି fish ମାନଙ୍କୁ ବି various types of diseases ହୁଏ okay so fish health କଣ ଆମେ କରିବା ଯଦି fish ରେ physically well ଅଛି then ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ healthy fish କହିବା ଆଉ any deterioration in the physical well-being of the fish is known as like disease okay so disease what is a disease when there is any infection in our body by a pathogen and that has a symptoms symptoms shown in the body that is known as uh, disease so fish ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା disease ହଉଛି ତାଙ୍କ body ରେ ତାଙ୍କର ବି various types of infection ହୁଏ okay so these diseases in fishes are again classified into what two types communicable disease non communicable ଯେମିତି ଆମର communicable non communicable disease ଅଛି human ମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ fish ମାନଙ୍କର ବି communicable non communicable disease ହୁଏ communicable disease are infectious disease which is transmitted from one fish to another similarly non communicable or non infectious disease which is not transmitted from one person to another okay ତ ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଦିଟା ଟାଇପ ର ଡିଜିଜ ହଉଛି ସେମିତି ଫିଶ ମାନଙ୍କର ବି ହଉଛି okay so there are various terms like host so host ଆମେ କାହାକୁ କହିବା which is infected by the pathogen so pathogen କୋଉଟା the organism which infects is known as pathogen and to whom it infects that is known as a host okay so these pathogens can be bacteria can be fungus can be virus can be any type of parasites which causes the infection okay so there are various types of disease जोटा मु कहले बे नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कोन जोटा कि गोटे पर्सन रु आ गोटे पर्सन को ट्रांसफर हेई परिबो नाही सो दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड बाय फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ओके and communicable disease or infectious disease which are transmitted from one person to another केतेबेले ट्रांसमिट हबो जदि सेटा गोटे वायरल डिजीज हेतिबो कि बैक्टीरियल डिजीज कि फंगल डिजीज कि पैरासाइटिक डिजीज हेतिले ही सेटा गोटे पर्सन रु आ गोटे पर्सन को ट्रांसमिट हे परिबो सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल डिजीजेस occurs in the fish रे कोन कोन सब वायरल डिजीज होची okay so disease number 1 is channel catfish virus disease ccvd that is channel catfish virus disease okay so here that fish which is affected is European catfish. So this is a viral disease. Okay. Virus द्वारा infection हेले disease टा हुए. कौन symptoms रहिबो fish रे? Characteristic swimming behavior of head high and hanging position at the water source. Okay. Abdominal distension. Then hemorrhagic pale gills. Hemorrhagic pale gills माने gill रे color change हबो. Gills generally हमरो red थाए. Okay and that will become pale in color तार swimming behavior change habo they will be not swimming properly okay so they will have a circular hemorrhagic spot at the base of the fins okay fin तळे तांकर different hemorrhagic spot माने red रो spot जेम देखा होची देखो fish रे देखा होची channel catfish viral disease केमति red spot हेची तांको fin तळे तो एई भलिया जदि स्पॉट हमें देखिबा हमें कहबा फिश रे गोटे वायरल डिजीज हेची दैट इज चैनल कैटफिश वायरस डिजीज CCVD similarly another disease is grass carp hemorrhagic disease GCHD so this is a here the species affected is cyprinids so this is another species which is affected by this disease
से सिम्पटम्स कौन होची डार्केनिंग ऑफ बॉडी ओके hemorrhagic at the base of fins like the spot type ओके रेड भलिया हे जाउची देखो फिन तळे बॉडी डार्क हे जाउची ओके इंटरनल हेमोरेज ऑफ मसल इंटेस्टाइन तांगर इंटरनल इंजुरी होची कहार मसल इंटेस्टाइन लिवर किडनी एंड स्प्लीन सो ए सब ऑर्गन अफेक्टेड होचंदी ए डिजीज द्वारा सिमिलरली अनदर डिजीज वायरल डिजीज इज spring viremia of carp that is SBC okay so here also different species are affected like common carp koi carp Crucian carp so Chinese carp so different goldfish एगुड़ा सब affect होची कोथरे this viral disease SBC okay तार भी different sign symptoms रहउची like enlarged abdomen तांको abdomen enlarge हे जिवो पेट पोर्शन ना बहुत बड़ हे जिवो protruded eye बाहर को बाहर जिवो dark coloration of the body dark color हे जिवो loss of equilibrium they cannot swim properly तांको equilibrium loss of body रो equilibrium से माने करि परिबेनी okay then hemorrhagic pinpoint round spot तांको body रे round spot हे जिवो on the skin eyes and under the operculum gills are become pale okay तो ये सब symptoms होची कार SBC disease रो which is a viral disease similarly another disease is koi herpes virus disease KHVD okay so these are the species affected and this is the symptom another is herpes viral hematopoietic necrosis so herpes viral hematopoietic necrosis this is mainly the species affected here is goldfish see here 11.4 how the goldfish looks when it has this particular disease herpes viral hematopoietic necrosis माने होची सेल डेथ जेतले सेल तारो फिश मानकर सेल निजे निजे डेथ हेबा स्टार्ट करबो से कंडीशन टा कहा जाय नेक्रोसिस सो सेतरे साइन सिम्पटम्स कोन जोची इन्फेक्टेड फिश आर ano anorexic with general sign of lethargy and settle at the bottom of the tank of the pond माने कोन होची ताकर लेथार्जी माने से माने पूरा गोटे पोजीशन रे स्टैटिक हे की रहि जानती मूवमेंट करंतिनी सेटा को जाय लेथार्जिक बॉडी गिल्स बिकम pale color हे जबो गिल्स then the cells start necrosis ओके ताकर सेल माने नेक्रोसिस हेबा स्टार्ट करिवे जा फळे सेल डेथ इंक्रीज हबो आउ ताकर सेल डिटोरिएट ताकर टिश्यू डिटोरिएट हेबा स्टार्ट हबो another disease is carpox this is another viral disease this is mainly affects the caps okay similar different types of bacterial disease in fishes are like columnaris the first disease is columnaris which is affected by goldfish common carp okay rohu tilapia ei सब fish माने ए disease द्वारा affect होंदी sign symptoms कोन रहइबो initial infection is characterized by white spot on the parts of the head तांको head रे white spot okay देखो एटा डायग्राम 11.7 को भला देखो स्किन रे कोणा हे की जाई जाउची ओके आ बॉडी रे तांकर स्किन रे व्हाइट स्पॉट देखा जिवो व्हाइट स्पॉट ऑन द पार्ट्स ऑफ द हेड fin body and gills तो ए सब जगह रे तांकर व्हाइट स्पॉट देखा जिवो and also typical reddish sting surrounds the white spot okay then lesions are circular तांकर जो लेशन फॉर्मेशन हो जो खंडिया टाइप रो होची सेडो सर्कुलर हे की फॉर्मेशन होची which is spread माने धीरे धीरे सेटा बढ़े जदी इन्फेक्शन बढ़िबो से लेशन टा भी बढ़िबो okay then the this characterized by epidermal spongiosis ulceration and necrosis ulceration माने घा हबा the tissue starts damaging and produce ulcers and necrosis infected fish die from respiratory difficulty due to gill lesion तो जेन तांगा gill को affect करूची maybe the fish will die because gill रे जदी affect करूची respiration तांकर affect हबो so they will die similarly another various types of other bacterial diseases are there like Edward septicemia this is another bacterial disease which are affected by common carp tilapia mullets catfish तो ये सब species गुड़ा ये disease रे होंदे see the symptoms here how it is look like figure number 11.8 so when they have this particular disease their skin will be looking like this आ तंकर मेनली सेटा बॉडी रो लिवर आ किडनी को अफेक्ट करिवो ओके आ तंकर स्किन रे लेशन फॉर्मेशन हबो okay and they start smelling
ତାଙ୍କର ବଡିର ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଯାହା ଫଳରେ they will start smelling. Then disease vibriosis. Disease vibriosis is another type of bacterial disease which is found in the common carp, tilapia. So ei sabure vibriosis hochi. These are the symptoms. See figure 11.9. If vibriosis occurs, these are the symptoms. এইভଳିଆ ଯଦି ହେଇଥିବ ଫିସ୍ ରେ ଆମେ କହିବା there is the disease vibrio. Then another bacterial disease is motile aromodate septicemia or dropsy. Okay, so here is also various species are affected. Common carp, goldfish, tilapia, catfish, ei सब species गुड़ा सेटा affect होची. These are the sign and symptoms. See how they looks like if they are having the particular disease. Then disease red spot disease. Okay, red spot disease, that is again that is affect to tilapia, goldfish, these are the species. And see they are the red spot disease. They are characterized by production of red spots on their skin. Okay, accumulation of reddish fluid in the peritoneal cavity, greenish to yellowish liver color of the liver changes from greenish to yellowish. Inflammation of blood vessel, tanga blood vessel inflammation hi jaye. Okay, hemorrhages in the skin, operculum, mouth, ventral region of the fish body. Hemorrhage mane accumulation of blood accumulate ହେଇକି ସେ ଜାଗାରେ red ଦେଖାଯିବ, ସେଟା କୁହାଯାଏ hemorrhage. So this is another type of bacterial disease. Okay, similarly bacterial kidney disease. So mainly the kidneys are affected by the different types of bacteria. Similarly piscine tuberculosis. Piscine tuberculosis means, piscine means fish. तो fish रे भी आमर जेमति tuberculosis होची, fish मानकर भी tuberculosis होची. That is caused by mycobacterium tuberculosis bacteria. Again को fish माने एथरे affect होचंदी, tilapia, ornamental fishes, various types of ornamental fishes, salmons, climbing pods. So एगुडा सब different types of fish जोटा कि ए piscine tuberculosis रे affected होंदी. Then coming to the fungal disease. So various fungal disease also occurs in the fishes. That fungal infection, like we are having the fungal infection, like one of the fungal infection is ichthyosporidiosis. Okay, the species here, that trouts, herrings, okay, cords, ei सब species एटा affect होची. तार sign symptoms कौन रहइबो? The disease may or may not be present depending on the fish species. So most commonly the fish they have like we have ଯେତେବେଳେ ଆମର fungal infection होची ଆମର କଣ lesion କୁଣ୍ଡେ होची, lesion formation होची, like that ସେମାନଙ୍କର ବି lesion formation ହବ on their skin. So mainly the epidermal cells of the skin they are affected by this fungal diseases. Next another fungal disease is brachiomycosis, that is gill rot. So gill rot, this is also a fungal disease if there is fungal infection of various types of fishes like common carp, goldfish, tilapia. So ei सब fish रे जदी a brachiomycosis disease hochi, then the gills are mainly affected by this disease. The gills appear pale in color and presence of necrotic patches. Necrotic patches mane seti cell death heba start karibo jaha phale necrotic patch dekhajibo gill re. That means gill will no more function. Gill ର function kami jibo if it is having this type of infection, fungal infection. Several other fungal diseases like saprolegniasis. Then another is saprolegniasis is another type of fungal disease. Okay, here also different types of fishes they are affected. These are the fishes and these are the sign and symptoms. See the diagram here 11.16. This is the disease looks like if it is having saprolegniasis fungal infection. The skin is affected as well the gills are affected. Next coming to the parasitic disease. Parasitic disease kona? Parasites are what? These are the organisms which live inside the host and they affect the host negatively. So तांको भितरे रही कि से माने host को affect करंदी. So these parasites can be two types, ectoparasites and endoparasites. Ectoparasite which live on the body, body रो बाहरे रही कि जो माने affect करंदी host रो ताको कहा जाए ectoparasite. जो माने body भितरे रही कि affect करंदी body को host रो ताको कहा जाए endoparasite. Similarly fish भितर भी किछि parasites बढ़ंती जो माने fish को various types रो disease करंती. Okay, like disease one is whirling disease. Whirling disease, here these are the species affected: carp, mullet, eel, climbing pod, snakehead fish.
Okay, so causative organism is Myxopulus species. So this is a parasite which is found in the fish. Okay, so the parasite infection over, what is the sign and symptoms in the fish? Loss of equilibrium in swimming behavior. So ସେମାନେ ଭଲରେ swimming କରିପାରିବେନି, swimming time ରେ ତାଙ୍କର equilibrium loss ହବ ହେଲା. Okay, melanization of caudal region of the fish body. ଲାଞ୍ଜ ପାଖରେ ତାଙ୍କର melanization ମାନେ କଳା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ. ମେଲାନିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଯଦି ବେଶୀ ସିକ୍ରେସନ ହବ ସେଟା କଳା କରେଇ ଦିଏ ବଡିକୁ ବେଶୀ, ତ ତାର ମେଲାନିନ୍ ସିକ୍ରେସନ ବଢିଯିବ କୋଉ ପର୍ସନ ରେ? ଲାଞ୍ଜ ପର୍ସନ ରେ, କଡାଲ ରିଜନ ମାନେ ଲାଞ୍ଜ, ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ. ଓକେ, ଫର୍ମେସନ ଅଫ ସିଷ୍ଟ ଅନ ଦ ଗିଲ୍ସ. ଗିଲ୍ସ ରେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହବ, ଆଉଟ ଗ୍ରୋଥ କିଛି ଫର୍ମେସନ ହବ. ଗିଲ୍, ସ୍କିନ୍, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଲାଇକ ବ୍ରେନ୍, ହାର୍ଟ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହବ. ରପ୍ଚର ଅଫ ଦ ସିଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଥିକ୍ ମିଲ୍କି liquid. ओके, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟ ଗୁରା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ, ସିଷ୍ଟ କଣ? ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ମାସ୍ ଅଫ ସେଲ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୋ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ୍ ଅଫ ସେଲ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଯାଏ ସେଇଠୁ ହ୍ୱାଇଟ ଲିକ୍ୱିଡ ଡିସଚାର୍ଜ ହବ ତାଙ୍କ ବଡିରୁ. ଦେନ୍ ଡିଜିଜ, another parasitic disease is chilodonelliasis. Okay, so this is another parasitic disease that is affects the common carp, tilapia, and these are the symptoms, sign and symptoms of the disease. Next is disease costiasis. Costiasis is another parasitic disease in the fish which is caused by Costia species, and here the species which are affected, fry and fingerlings of freshwater species. ओके, तो ଏଇ ସବୁ मेनली से छोट छोट माछ को बेसी अफेक्ट करे. फिंगरलिंग्स माने बहुत छोट छोट माछ जोड़ा तांकू अफेक्ट करे ए पर्टिकुलर पैरासाइटिक डिजीज. ओके, so these are different types of agrolosis. This is another parasitic disease in the fish. Just read the sign and symptoms of all the diseases. Next, coming to the common fish pathogens and route of pathogen entry. Okay, तो ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନିକ ସେ ଫିଶେସ୍ ମାନଙ୍କୁ various types of disease ହଉଛି, ତ କୋଉ କୋଉ through ରେ fish ଭିତରକୁ pathogen ମାନେ entry କରନ୍ତି. So if it is a virus, ଯଦି virus ହଉଛି, okay, various types of virus like herpes virus. herpes virus କୋଉ disease କରୁଛି? CCVD, जो first disease ଟା ଆମେ ପଢିଲେ, ତାର route of entry କଣ? So the entry of virus to fish body occurs primarily through the gills. Gills through ରେ ସେ entry करे body ଭିତରକୁ. Okay, and the transmission of virus can occur from fish to fish by ingestion of contaminated feed or infected fish. जो infected fish को आ गोटे fish खाऊची और contaminated food रू ही एटा entry हुए. Okay, similarly another virus is grass carp reovirus. Okay, which causes grass carp hemorrhagic disease. पढ़िला ଆମେ ପୂର୍ବରୁ. ତାର route of entry କଣ? ତାର route of entry is also through the gill. gill through ରେ ସେ ପଶୁଛି. either gill through ରେ କି ଯଦି skin ରେ କିଛି mechanical injury ହେଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା କିଛି, ତା through ରେ ବି ଏଇ virus body ଭିତରକୁ, fish ର body ଭିତରକୁ ପଶେ. Okay, similarly another virus is rhabdovirus. Rhabdovirus which is enters through the gill, enters through the gill. Similarly cyprinid virus that enters the entry through the gills, primarily gills through entry karanti, and also through the skin. Similarly, so these are different types of virus and their mode of entry. Similarly, bacteria, different types of bacteria, they can also invade the fish body either through the gill or through the skin or through the contaminated food, contaminated water. तो ଏଇ through ରେ bacteria ଭିତରକୁ, bacteria fish ର body ଭିତରକୁ ପଶି, like flavobacterium. Flavobacterium which causes the, हम जो first disease टा पढ़िले bacterial disease, columnaris. So that is, this bacteria enters the body through the infected water. Infected water रे का through रे पशुची? Gills through रे. It infect primarily through the gills and epidermal region, माने epidermal cells of the skin. Okay, तो ता through रे से entry करची. ଆଉ ଆସୁची କୋଉଠୁ? contaminated water. ଯେତେବେଳେ contaminated water gills को ଯାଉଛି for the respiration process, ତ gill through ରେ ସେଟା entry କରୁଛି body ଭିତରକୁ, fish ର body ଭିତରକୁ. Okay, so these are like vibrio species. Vibrio species which causes vibriosis. It enters through the gill. So third disease is, we see the number 3, vibriosis.
that is also enters the gills and the skin. So most of the pathogens, bacteria ho ki virus ho, they specifically enters through the gills and the skin. If there is any wound in the skin, they will enter through the skin or through the uh, gills. They are entering into the fish body. Similarly, fungus, various types of fungal disease. Okay, so first disease is ichthyosporidium. Ichthyosporidiosis जो disease करुची, that is a fungal disease. So here this fungus enters through the gastrointestinal tract of the fish. Fish ro gastro माने digestive system through रे entry करुची. When a fish is eating a infected fish tissue, ଯେତେବେଳେ ସେ fish ଟା ଗୋଟେ କିଛି infected tissue କୁ ଖାଉଛି, ତା digestive system ଦେଇକି ଏଇ fungus ଟା ତା body ଭିତରକୁ enter କରୁଛି. Okay, then brachiomyces species that causes the brachiomycosis, that is gill rot, it is under fungal disease. So here also this pathogen is entering into the body through the gills through रे ही ଭିତରକୁ ସେ ପଶୁଛି. So these are different other types of fungal species and their route of entry. Similarly, different parasites like myxobolos species. Okay, whirling disease जोड़ा करुची. तो एटा को थ्रो रे पसुची, it is entering through the mucosal tissue. Okay, mucosal tissue को enter करुची through the skin, through the gills, through the intestine. Either intestine कि gills कि skin through रे, माने खाद्य जो से खाउचंदी से खाद्य through रे either पसुची intestine रे or skin or gills through रे पसुची. Similarly, these are different types of parasites and their mode of entry. Either fish माने skin through रे entry करुचंदी or gills through रे entry करुचंदी. Disease control and health management. Okay, तो ये सब disease है, we have to also manage the disease. आमे ताकू control करिवा और ताकू prevention करिवा. Okay, control आमे केमती करिवा? We will control by giving a देमानको मेडिसिन देके आमे कंट्रोल करिवा और देमानको क्वारंटाइन देके कंट्रोल करिवा. माने जो फिश डिजीज हेची ताको आमे बाहर करके अलगा एनवायरनमेंट रे ताकू ग्रो करेवा. ओके, सो ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वायरल डिजीज. So treatment of control of bacterial disease. So there are various types of bacterial disease. आमे ताकू केमिति कंट्रोल करिवा. So here see, if the disease is columnaris disease जदी हेची आमे ट्रीटमेंट केमिति करिवा? Pond disinfectant. We will use the pond disinfectant. So here we will use potassium permanganate KMnO4 at a concentration of 2 to 3 mg per liter of water. Okay, so 2 to 3 mg per liter आमे potassium permanganate जदी यूज करिवा, then columnaris disease will be cured or treated. आमे एटी पानी रे ही हमको देबाको पड़िबो, कारण फिश बहुत सारा अछि. आमे समस्त को इंडिविजुअली आमे ताको मेडिसिन फीड करि परिबानी. तो आमे एटी कोन डिसइनफेक्टेंट छिंचिबा कोठी आमे पानी रे ही छिंचिबा. तो जदी columnaris हेची आमे एटी potassium permanganate यूज करिबा in a concentration of 2 to 3 mg per ml, 2 to 3 mg per liter of water. Okay, if it is Edward septicemia, another bacterial disease. Okay, so here what we'll use? We'll here use iodine solution. Okay, आमे iodine solution छिंचिबा पानी रे. Okay, that is 40 mg per liter. 40 mg per liter of iodine solution. Then we can also use the antibiotic like sulfonamide, tetracycline in the feed. आमे खाद्य थ्रो रे आमे ताको antibiotic देबा. कोन antibiotic? Sulfonamide, tetracycline, that is 12 mg per kg of the food. गोटे kg food रे 12 mg रो आमे antibiotic देबा. Similarly, vibrio हेतिले आमे पानी रे सेठी कोन देबा? Slaked lime, CaOH2. आमे सेठी lime is a disinfectant. आमे पानी रे ताको छिचिबा. कोन slaked lime, that is CaOH2. Also we can use sulfonamide, nitrofurazone, okay, oxytetracycline. एगुडा सब antibiotic आमे यूज करिबा in the food or will go for the vaccination process. Okay, आमे vaccine भी देई परिबा fish मानको. So एगुडा सब different types of bacterial disease and their treatment. तो either आमे किछि disinfectant treatment करिबा और किछि antibiotic तांको देकी से disease को आमे treatment करिबा if it is a bacterial disease. Okay, next
control of fungal disease. Okay, fungal disease like ichthyosporidiosis. Okay, एठी हम यूज करिया pond disinfectant, that is copper sulfate. आमे copper sulfate is यूज करिवा जदि ए डिजीज ता है ichthyosporidiosis in a dose 1 mg per liter. Okay, 1 mg per liter हिसाब रे हमें यूज करिवा if it is having a this particular fungal disease. If it is brachiomycosis or gill rot, then we'll use the disinfectant, that is calcium cyanamide at dose of 2 mg per liter. Okay, 2 mg per liter हमें calcium cyanamide use करिवा if the fishes are having brachiomycosis disease. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ ହଉଛି କି ଆମେ କୋଉଠି aquaculture କରୁଛେ, ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ disease particular disease ହଉଛି ନା, all the fishes will be will have this particular disease. କାହିଁକି? ସେମାନେ water medium ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ water medium ରେ ବେଶୀ ହିଁ bacteria ମାନେ easily ସେମାନେ ଗୋଟେ host ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ host କୁ easily ସେମାନେ transmit ହେଇପାରିବେ. ओके, तेणु आमे पानी रे डिसइनफेक्टेंट पकेले कि पानी रे ही आमे एंटीबायोटिक जदी पकेबा तो फिशेस विल बी बेनिफिटेड. Okay, then treatment and control of parasitic disease. Okay, so whirling disease jodi thibo, whirling disease jodi heitibo, then we'll use the disinfectant, that is calcium cyanamide at a dose of 1 kg per meter square. आमे जेतिक एरिया aquaculture करथिबा तो गोटे मीटर स्क्वायर एरिया रे आमे गोटे केजी रो पकेबा कोन calcium cyanamide. Okay, next is see the disease number, third number disease costiasis. Costiasis is both treatment of formalin. Formalin आमे सेठी यूज करबा 250 ml per liter और formaldehyde आमे यूज कर परबा. Formalin और formaldehyde यूज करके आमे ता डिजीज को ट्रीट कर परबा. और आमे एठी एंटीबायोटिक दे परबा tetracycline. Tetracycline antibiotic, that is 5 mg per gram of feed. Okay, so similarly these are other type of parasitic disease. Now आमे सेठी either disinfectant or antibiotic देके आमे will cure the disease. Next आमे prevention of disease. Disease को prevention केमती करिवा? Prevention is better than cure. So जेमती आमे किछि एमती सब मेजर नेबा जहा फले सेठी आउ particularly infection ही हबनी. Okay, तो सेठी में आमे कोन करबा? We will take the preventive measures. कोन preventive measures नेबा? First तो आमे एमिति जागा बाछिबा for the aquaculture. So we have to choose the appropriate pond or hatchery design. तो आमे एमिति जगह रे हम appropriate pond choose करिवा for the aquaculture process कि सेठी easily सेठी बेसी micro organisms नथिबे. ओके, कि आमे तको एमिति properly design करथिबा कि सेठी micro organism बेसी grow हेई परिबेनी. Maintenance of good quality of water. Always आमे water quality को maintain करिवा. Proper interval रे आमे water को change करिवा. Water जदि proper quality maintain न हो, that will lead to growth of microorganism and fish will be affected. Fish will be having various types of disease. So we can also go for handling and sanitary practices. So with time interval आमे sanitary practices करिवा. कोठी pond आमे जोटी aquaculture करूचे, आमे with time interval disinfectant आमे जदि सेठी spray करिवा, then also समान बेसी disease हबनी. Quarantine measures माने आमे चेष्टा करिया फिश मान को सेपरेट रखिया पई, किछि किछि दिन क्वारंटाइन रे रहिबे से माने. ओके, तो ए थ्रो रे आमे प्रिवेंटिव मेजर्स भी नै परिबा. So these are different preventive measures taken to stop the disease occurrence. Disease जेमति फिश रे न हो तो आमे सब ए सब क्वालिटी चेक करिया, वाटर क्वालिटी चेक करिया, सॉइल रो क्वालिटी चेक करिया, प्रॉपर इंटरवल ले वाटर चेंज करिया, तार पीएच चेक करिया, बीओडी चेक करिया, टोटल ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन चेक करिया. तो आमे प्रॉपर्ली तार जदी प्रिवेंटिव मेजर्स नेबा, then there will be no diseases. Fish vaccine. So like we are taking the vaccine, आमे जदी वैक्सीन नोचे सेमति फिश मानकर भी वैक्सीन अछि. फिश को आमे जदी वैक्सीनेट करबा तांको गोटे पर्टिकुलर डिजीज हबनी. ओके, वैक्सीन रो मेकानिज्म कोन? How it works? So vaccine generally produces the B cells. Okay, B plasma cell, B lymphocytes, which stored as memory cell. आम बॉडी रे सेटा मेमोरी सेल हेकि रहि जिवो, जा फळे जेतेले रियल इन्फेक्शन हमकु हबो सेई टाइम रे डायरेक्टली एंटीबॉडी सिंथेसिस हबो और एंटीबॉडी विल फाइट अगेंस्ट द डिजीज. सो सेई भळे आमे फिश मानकु भी वैक्सीन दे परिबा. आ वैक्सीन गुडा कोन? व्हाट इज ए वैक्सीन? वैक्सीन ता कोन?
It is the self attenuated or heat killed pathogen injected into the body to fight against the disease. ଆମେ vaccine କାହିଁକି ନଉଛେ କୌଣସି disease against କୁ fight କରିବା ପାଇଁ vaccine ନଉଛେ ସେ vaccine ରେ ଥାଏ କଣ the microorganism itself ଆମେ ଯାହା against ରେ vaccine ନଉଛେ ସେଇ microorganism ରେ ହିଁ ସେଇ microorganism ଟା ହିଁ ସେଇଥିରେ ଥାଏ but it is attenuated ମାନେ inactivated ସେ pathogen ଟା active ନଥାଏ ଆଉ କଣ ସେଟା ହିଟ୍ କିଲ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ହିଟ୍ ଦେଇକି ମାରି ଦେଇଥିବା ଆମେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛେ ସେ ଯାଇକି ଆମ ବଡିରେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁନି ବଟ୍ ଆମ ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିଦଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ ପାଥୋଜେନ ପଶିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି antibody will be synthesized in body and the pathogens will be killed. Okay, so this is the see, so this is the development of memory cell against the antigen through vaccination. So vaccine ଦେବା ଫଳରେ କେମିତି memory cell develop ହଉଛି ତମେ immunity ପଢିଛ ଏଟା ଜାଣିଥିବ memory cell development କେମିତି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ antigen ଆମ body ଭିତରେ ପଶୁଛି first it will be recognized by the antigen presenting cells in the blood ରେ ଯୋଉ antigen presenting cells ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ recognize ହବ antigen presenting cells like macrophage ହଉଛି ଗୋଟେ antigen presenting cells. See the diagram here. Macrophage that is antigen presenting cells which present the antigen to T helper cell TH cell ମାନେ T helper cell ସେ antigen କୁ recognize କରିବ ଆଉ present କରିବ କାହାକୁ T helper cell କୁ T helper cell ଏବେ କଣ କରିବ T helper cell will activate the B cell ଏବେ B cell କୁ activate କରିବ okay B cell କୁ activate କଲା ପରେ B cell will start producing the antibody ଆମ ବଡିରେ antibody କୋଉଠୁ synthesis ହଉଛି B lymphocyte produce କରୁଛି ତ T cell activate କରିଦବ ତାହେଲେ B cell କୁ B cell synthesis କରିବ antibody ତ ସେଇ B cell କଣ ହେବେ memory cell ହେଇକି ରହିଯିବେ କୋଉଠି ଆମ blood ରେ ଯେତେବେଳେ again ସେ particular pathogen real pathogen ଆମ ଭିତରେ ପଶିବ directly B cell ବନିକି ଅଛି ଆଉ ଏ antigen processing presentation to T helper cell activation B cell activation ଏଇ process ସବୁ ଆଉ ହେବାକୁ ପଡିବନି directly ଏବେ ଯୋଉ memory cell ଅଛି ସେ direct antibody produce କରିବ ଆଉ those pathogens will be killed. So this is how the vaccine works. So vaccine makes the memory B cell which directly produces the antibodies. So what are different types of vaccines used? Like killed vaccine ମାନେ ପୁରା ଆମେ pathogen କୁ ମାରି ଦେବା ଆଉ ସେ pathogen ଟାକୁ vaccine ଭଳିଆ use କରିବା or live attenuated vaccine okay ତ ଆମେ ମାରିବାନି pathogen କୁ ଆମେ ଏଠି ମାରୁନେ but ତାକୁ inactive କରିଦେବା attenuated ମାନେ inactive either କୌଣସି chemical treatment ହଉ କି heat treatment ହଉ ସେ treatment କରିକି ଆମେ ସେ pathogen କୁ inactive କରିଦେବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିବାନି so here it is live but attenuated vaccine. Similarly recombinant vaccines କଣ ଆମେ जो recombinant DNA technology यूज କରିକି ଆମେ କିଛି pathogen ର ଗୋଟେ particular gene କୁ ନେଇକି ଆମେ clone କରିବା recombinant DNA technology यूज କରିକି ଆଉ ସେ particular ଏବେ gene ଟାକୁ try କରିବା infect କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମାନେ try କରିବା vaccine ହିସାବରେ inject କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଟା ହଉଛି recombinant vaccine okay so this recombinant vaccine can be subunit vaccine can be DNA vaccine can be RNA vaccine okay so DNA vaccine କଣ ଆମେ pathogen ର DNA ଟାକୁ ନେଇକି vaccine ବନେଇବା okay ଗୋଟେ pathogen ରେ କଣ ଅଛି ସେଥିରେ carbohydrate ଅଛି protein ଅଛି lipid ଅଛି ଆଉ DNA ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ cell କୁ ଯିବା cell ଭିତରେ କଣ ଥାଏ ଏଇ ଚାରଟା macromolecule ହିଁ ଅଛି carbohydrate protein fat ଆଉ nucleic acids ତ ଆମେ ଗୋଟେ pathogen ର कार्बोहाइड्रेट को भी यूज करबा एज ए वैक्सीन तार कोनोसी प्रोटीन पार्ट को भी यूज कर परिबा तार कोनोसी डीएनए पार्ट को यूज कर परिबा आरएनए पार्ट को यूज करबा एज ए वैक्सीन तो हम जदी डीएनए यूज करछे टू प्रिपेयर द वैक्सीन दैट इज नोन एज डीएनए वैक्सीन जदी आरएनए यूज करबे आरएनए ऑफ द पैथोजन इज यूज्ड फॉर द वैक्सीन पर्पस दैट इज नोन एज आरएनए वैक्सीन. So this table number 11.1 this is the list of total fish vaccines used in aquaculture globally. तो केते वैक्सीन सब फिश अगेंस्ट रे बनिची आ ग्लोबली कोठी कोन सब यूज होची एटा गोटे तार लिस्ट अछि ओके like attenuated vaccine different types of attenuated vaccine रहउची ओके IMM
that is the name of the vaccine. kahaku diya hauchi? All freshwater species, salmon, turbot, bass, तो यही सब को दिया हौची. को pathogen against रे? Disease columnaris. Columnaris ଆମେ ପଢିଲେ bacterial disease, ତା against ରେ ଏଇ particular vaccine ଦିଆ ହଉଛି. ଏଇଗୁଡା ସବୁ list of vaccine, okay, and they are administered to the various fish types. Okay, then method of vaccination. How the vaccination is done? Like human case रे जेमिति vaccination होची, fish case रे भी सेही भलिया. Some vaccines are given orally, माने पाटिरे दियंती तांको, that is known as oral vaccination. Okay, or injection vaccination or immersion vaccination. So immersion vaccination kona? Vaccination of fish through immersion method involves immersing the fish in water containing defined concentration of vaccine antigen. Okay, तो ये कौन आमे फिश को डायरेक्टली दौने, आमे वाटर रे ही वैक्सीन पके देबा. तो वाटर रे वैक्सीन पके देबा, से वाटर रू ही फिश माने वैक्सीन को निज बॉडी को नेबे. सो दैट इज नोन एज immersion vaccination. Then injection vaccination will directly inject the vaccine into their body, like आमे injection नोचे vaccine ना, से भला fish body को आमे directly injection देबा vaccine रो. Okay, so this is all about the diseases, different types of diseases in the fish, their control, treatment, their prevention, and vaccination process in the fish. Next, coming to the aquaculture economics, marketing and cooperatives. So aquaculture economics means economics that is related to the finance. Okay. So aquaculture economics means आमे aquaculture रे केते खर्च होची, आमे केते revenue generate करछ, हमर केते profit होची, तो सेही स्टडी टा को कहा जाय aquaculture economics. Okay. So this aquaculture economics, that is the finance component of aquaculture, it involves two major components. Okay, cost component and return component. Cost component कोन? आमे aquaculture करिवारे केते पैसा खर्च करछे, सेटा होची cost component. And return component, आमे प्रोडक्ट माने फिश हार्वेस्ट करिकी बिकिला परे आम पाखକୁ केतिकी पैसा आसिला, सेटा होची रिटर्न कंपोनेंट. सो दीटा जिंस रहउची इकोनॉमिक्स ऑफ aquaculture रे, cost component and return component. Cost component is the expenditure part and return component is the gain part or profit part. What is cost component? So cost component of the aquaculture includes several items which are categorized into two major heads: capital cost and operational cost. So there are आमे जो cost component माने जो खर्च होची during the aquaculture, से cost component टाको दीटा भागरे divide कराइछि. Capital cost, operational cost. Capital cost माने एमितले start करछ aquaculture process, आमको land दरकार. ओके, सेठी खोलिबो, खोलिकी डिग करिवो, पॉन्ड बनेइबो, सेठी पानी छाडिबो. तो से जो इनिशियल स्टेप रे जो लैंड किणुचे, पानी यो को, से जो कॉस्ट गुडा होची कोन? कैपिटल कॉस्ट, जोटा इनिशियली हमको दरकार, जोटा जनरली लोक माने बैंक रो लोन बोन नै कि करंदी. ऑपरेशनल कॉस्ट कोन? आमे पॉन्ड बनै सला परे फीस छाडी देले, फीस छाडला परे तांको मेंटेन करिया पई, ऑपरेशन करिया पई जति कि सब हमर खर्च होची, सेटा होची ऑपरेशनल कॉस्ट. ओके, so the cost component involves two cost. हल एटा देखो figure number 12.1. तो it has capital cost, it has operational cost. Capital cost कौन कौन आछी? Cost of the land, construction of pond, pond आमे तले construction करते सेतरे केते खर्च होची, construction of hatchery, office आमे गोटे office खोलचे ता पई तार केते खर्च होची, land किणुचे, land रे केते खर्च होची, सेटा होची तार कैपिटल कॉस्ट, जोटा कि इनिशियली हमको खर्च करिया को पड़े. ऑपरेशनल कॉस्ट कोन? थ्रू आउट एक्वाकल्चर हमर ऑपरेशनल कॉस्ट चाली थाए. हेलो, हाँ हाँ मु घरे अछि, आसी जंतु.
ओके सो ऑपरेशनल कॉस्ट रे कोन आसुची ऑपरेशनल कॉस्ट रे सी फिक्स्ड कॉस्ट रे आसुची तुमरो लीज ऑफ लैंड इंटरेस्ट कैपिटल डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट एट वेरिएबल कॉस्ट रे कोन आसुची सीड फीड आमे जो लीज ऑफ लैंड जदि आमे लैंड लीज नैथिबा ताकू प्रॉपर टाइम रे हमको तुमको पैसा देबाको पड़िबो कि आमे जदि बैंक रू पैसा लोन नै की करथिबा ताकू प्रॉपर टाइम रे इंटरेस्ट देबाको पड़िबो ओके तो एई सब होची फिक्स कॉस्ट माने जार अमाउंट होची फिक्स सेटा वेरिएबल नुहो हमको गोटे फिक्स पर्टिकुलर रेट रे आमे बैंक को इंटरेस्ट देताऊ आउ वेरिएबल कॉस्ट रे कोन आसी सीड सीड माने अंडा आमे जो अंडा किणी की पकोचे कि छोट छोट माछ किणी की पकोचे तार कॉस्ट ओके फीड तांको फूड जो आमे दउचे तार कॉस्ट सेटा होची वेरिएबल कॉस्ट जोटा कि ऑपरेशनल कॉस्ट फर्टिलाइजर यूज करचे टू किल द वीड्स पानी रे जो अनवांटेड सब प्लांट्स एनिमल ग्रो करंती तांको मारिया पई आमे गुटे मिनिट फर्टिलाइजर यूज करचे गुटे 2 मिनिट्स हा पिला माने ओटीपी अछि की हां थैंक यू okay then we are applying the fertilizer then we are paying the salary to the laborer आमे aquaculture जो laborer involve करैते तांको salary देबाको पड़िबो water supply electricity okay repair and maintenance आमे properly ताको maintain करिवा marketing तो ए सब रे तारो खर्च हुए so this cost component includes two cost capital cost and operational cost capital cost are these and operational cost are these ओके सो कैपिटल कॉस्ट रे कोन आछ डायरेक्ट कॉस्ट लाइक प्रोजेक्ट सर्वे कॉस्ट आमे फर्स्ट प्रोजेक्ट को आमे जले स्टार्ट करबा एक्वाकल्चर प्रोसेस ताको फर्स्ट आमे सर्वे करबा कले ठीक हबो कि नहीं सब डिफरेंट क्राइटेरिया रखी कि आमे सर्वे करबा देन लैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन ओके ए सब कॉस्ट तार रहउची कैपिटल कॉस्ट जोटा कि स्टार्टिंग रे दरकार ओके देन आल्सो सुपरविजन एंड इंजीनियरिंग आमे आमे पॉन्ड बने पई को इंजीनियर को डाकिबा कॉन्ट्रैक्टर फीस कॉन्ट्रैक्टर नबो कंटीजेंसी अदर फीसेस सो से एगुडा सब मिसई कि तार कैपिटल कॉस्ट होची देन ऑपरेशनल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट रे आसी कोन लीज ऑफ लैंड जोडा मु कहिले बेटी के पुरो इंटरेस्ट कैपिटल डेप्रिसिएशन देन वेरिएबल कॉस्ट रे सीड फीड फर्टिलाइजर सैलरी to the laborers then other production cost marketing cost तेगुडा सब operational cost रे आसुची so this is all about the cost okay then coming to the return component cost component होची हमर expenditure part टा okay जोटा कि हम दीटा वे expenditure होची and coming to the return component माने हमें केते revenue generate करूचे माने केते हमर profit होची after the aquaculture process एदा होची return component so return component revenue is defined as the income of an agricultural unit generated through the sale of its produce तो केते हमें सेल कले हम पाखरे केते की टंका आछि केते की वेज प्रोड्यूस होछि सेटा होछि तारा रेवेन्यू आ प्रॉफिट कोन प्रॉफिट हमें जतले रेवेन्यू टोटल हमर रेवेन्यू जते जनरेट होला सेठु हमें माइनस कर देबा एक्सपेंडिचर हमें स्टार्टिंग जते स्टार्ट करिचे तांगर फीडिंग टू आरंभ करी जहां भी हमें खर्च करिचे सेटा को हमें माइनस कला पर जतिका बंचिबो सेटा होछि प्रॉफिट रेवेन्यू कोन रेवेन्यू जतिकी हमें फीस को बिकला पर हम पाखु जतिकी पैसाटा आसला सेटा होछि रेवेन्यू आ प्रॉफिट का कहबा रेवेन्यू रे जति हमें माइनस कर देबा एक्सपेंडिचर पार्ट को हमें जेटा पूर्व सब खर्च करचे सेटा को माइनस करिया पड़िबो तो सेटा माइनस कला पर जो पार्ट आसला सेटा होछि प्रॉफिट पार्ट ओके एटा सब डिफरेंट टर्म अछि यू जस्ट रीड एंड गो थ्रू इट जो डाउट रहबा किछि कहबो then coming to the marketing of fish okay marketing of fish so after the fish is harvested fish तांगर ग्रोथ हे गला एबे त फिश हार्वेस्ट हे जाईची हार्वेस्ट परे हमें फिश को केमिति मार्केट करबा केमिति सेल करबा ओके दैट इज द मार्केटिंग मेथड्स ऑफ द फिश तो फर्स्ट हमें डायरेक्ट सेलिंग करबा okay direct selling kono the fisherman directly sells the fish to the buyers in the primary market
without involving any intermediate. ओके एठी डायरेक्ट सेलिंग रे कोन होची फिशरमैन जे एक्वाकल्चर करछि से फिश तार धरिला हार्वेस्ट कला से निजे ही मार्केट को जाकी बसिला और सेठी डायरेक्टली से कस्टमर मानकु बिकिला सेटा होची डायरेक्ट सेलिंग ओके देन ऑक्शन सिस्टम आउ जने जने कोन करंती ऑक्शन सिस्टम करंती ऑक्शन ने कोन से ऑक्शन डाकिबे निलाम लाकिबे कि ए पोखरीटा जो पंटा मु बनेछि त किए केते टंका रे नै परिबो से निलाम डाकिबे जे जेते टंका रे राजी हैला से तार सेतिकी पैसा देकी से नै जिवो एबे सेई लोकर हेडेक से प्रॉफिट करिवो कि लॉस करिवो से टोटल फीस को हार्वेस्ट करिवो नै कि से मार्केट रे बिकिवो सेटा होची ऑक्शन सिस्टम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मेथड कोन इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ fish marketing in the country in this system the price of fish are fixed before the harvesting harvest करिया पूर्वरु से माने फर्स्ट fish रो प्राइस फिक्स करि दियंती and the traders make an agreement for the delivery of catches at the stipulated price एबे ट्रेडर जे से ताकू कहबो मते एतिकी प्राइस रे तमे हमकु एतिकी प्रोडक्ट दियो ओके सो सेटा होची कॉन्ट्रैक्ट मेथड आ सेबे तार हेडेक से मार्केट रे ताकू केते टंका रे बिकिबो के से कॉन्ट्रैक्टर मजरे जे फिस्ता नेला so marketing structure so there are 6 principal types of market intermediates okay market intermediates that occurs between the aquaculture and between the market mane between the customer और aquaculture भितरे there are various types of intermediates जहा थ्रो डायरेक्टली तो केबे केबे फिशरमैन माने डायरेक्टली जाय कि कस्टमर मन को बिकंती केबे केबे डायरेक्टली जानतिनी तांको भितर सब इंटरमीडिएट माने इन्वॉल्व होंती ओके जेमिति कि फिश डीलर्स मानकर काम कोन फिश डीलर्स कलेक्ट द फिश डायरेक्टली फ्रॉम द फिशरमैन और फिश फार्मर्स एंड से माने बे जायकी कस्टमर मान को बिकिबे से माने होचंदी फिश डीलर्स then fish assemblers collect fish directly from the fisherman dealers or both depending on the dispersal or landing location quantities handling road and communication network okay तो फिश असेंबलर मानकर काम कोन से बे सबु जगार फिश को एकाठी करिवो ओके जोटा कि तार कॉस्ट ता का ऊपर डिपेंड करिवो केते रोड ट्रैवल करी कि फिश ट्रांसपोर्ट हला केते क्वांटिटी ऑफ फिश ओके कम्युनिकेशन केमती अछि से समस्त को नै परबो फिशरमैन रो नै परबो डीलर रो भी नै परबो देन consignment agents are concerned with packaging and passing of the supplies as quickly as possible to the various market consignment agent मानकर काम कोन फिश असेंबलर माने फिश बे असेंबल कर दिले गोटे जगह रे फिश अछि कि गदा हे गला consignment agent बे कोन करिवे कहा कहा को फिश जीवो ताकू पैकेज करी कि से माने पठेइबे ओके तो फर्स्ट कोन होची फिशरमैन माने फिशिंग करूचंदी फिशिंग करी के हार्वेस्ट करी के से माने डीलर माने को दोचंदी डीलर माने असेंबलर माने को दोचंदी जोठी कि सबु आडू फिश अछि कि असेंबल हबो एबे से असेंबलर रो जीवो कहा को डिफरेंट मार्केट को कहा थ्रो रे कंसाइनमेंट एजेंट ताको पैकेज करी कि तार जो टारगेट लोकेशन को पठेइबो कहा को पठेइबो होलसेलर माने को पठेइबो गोटे एरिया रो होलसेलर से जेतल नै जिवो से अन्य मानु को एबे दबो तार डीलर मानु को गोटे होलसेलर थाए से होलसेल तार अंडर जेति कि लोक को रखि दिबो ताकू दबो से माने एबे जाय कि मार्केट रे बिकिबे ओके so this is how the marketing process done in the fish in the aquaculture process okay next is factors regulating price of the fish okay को फैक्टर फिश रो प्राइस को रेगुलेट करे फर्स्ट होची डिमांड ओके जो फिश रो जते डिमांड से फिश रो प्राइस विल बी मोर सो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ओके नेक्स्ट इज सप्लाई तो हमें जानि छे प्राइस इकोनॉमिक्स रे हमें पढी छे प्राइस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स डिमांड एंड सप्लाई डिमांड बढ़िले प्राइस बढ़िबो सप्लाई बढ़िले प्राइस कमिबो सप्लाई कमिले प्राइस बढ़िबो तो सेमती जेतले डिमांड बढ़ुची जो फिश रो जते डिमांड देखो जो फिश रो टेस्ट भलो तार डिमांड अधिक हो ता प्राइस विल बी मोर तो डिपेंड्स अपॉन द डिमांड बढ़िबो जेतले प्राइस बढ़िबो सिमिलरली सप्लाई जेतले बढ़िबो प्राइस विल डिक्रीज ओके सप्लाई बढ़ुची माने प्रोडक्शन बढ़ुची
जदि प्रोडक्शन बेसी होची तेणु सप्लाई बेसी होबो सप्लाई बेसी होले प्राइस ऑफ द फिश विल डिक्रीज सप्लाई जदि प्रोडक्शन कमी जिवो सप्लाई कम होबो देन प्राइस ऑफ द फिश विल इंक्रीज next coming to the fisheries cooperatives so what are cooperatives are a group of people okay ସେମାନେ ଗୋଟେ group of people जो माने combinedly ସେମାନେ ଗୋଟେ group बनै थांती they have a special target ଗୋଟେ target बनै थांती कि हमें एई टार्गेट टाको फुलफिल करबा जेମିତି गां गां रे वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव अछि ସେମାନେ କିଛି लोक आसी कि निजे मिसी कि ଗୋଟେ पर्टिकुलर ସେମାନେ एम रखंती ओके कि हमें गां रो एई गरीबी टाको मिटेबा कोन कोन कले गरीबी तो से एई गुडा सब कोऑपरेटिव कहा जाय सेमिति फिशरीज रो कोऑपरेटिव अछि ओके तो से फिशरीज रो कोऑपरेटिव रो काम कोन से काम होची प्रोविजन ऑफ livelihood to the people in the coastal area through equitable and efficient fishing business ओके तो सेमानकर मेन हम होची कोन कोस्टल एरिया जो लोक माने अछंती ताकू केमती हाईली प्रॉफिट हबो से माने एफिशिएंटली बिजनेस करि परिबो सेटा होची तांकर ऑब्जेक्टिव आउ कोन ऑब्जेक्टिव अछि इंटेंसिफाई द प्रोडक्शन थ्रू द मेकानाइज्ड व्हीकल्स ओके तो से माने स्मार्ट एक्वाकल्चर करिके केमती प्रोडक्शन को बढ़ेबे सेटा भी तांकर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव्स देन सप्लाई ऑन क्रेडिट मेकानाइज्ड बोट्स टू इट्स मेंबर्स जनरली से माने सब जिंस को ट्रैक करंती ताकि केमती फिशरी बिजनेस को से माने गोटे एरिया रो बढ़ेबे प्रोडक्शन को बढ़ेबे मार्केट को बढ़ेबे सो दैट देयर विल बी मोर रेवेन्यू जनरेशन इन द देन तांकर काम कोन प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ द फिश एंड फिश बाय प्रोडक्ट फिश रो मार्केटिंग केमती भल से हबो फिश रो जति कि बाय प्रोडक्ट बाहर छि तार मार्केटिंग केमती भल से परिबो से मानकर भी सेटा गोल तापर तांकर एम ऑब्जेक्टिव होची लोन क्रेडिट रिकवरी फ्रॉम सेल ऑफ द फिश एंड फिश प्रोडक्ट जदि केबे को लोक लोन नै कि एक्वाकल्चर करिछि तो से माने केमती प्रॉपर टाइम रे लोन रिकवरी करिवे से माने सेटा को भी से माने देखंती then तांकर other aim is socio economic upliftment of fishermen and women okay तो एटा होची गोटे फिशरी कोऑपरेटिव रो काम ओके कोऑपरेटिव रो काम कोऑपरेटिव टा कोन दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो माने सोसाइटी रो बेटरमेंट पई चिंता करंती तो सेमिति फिश कोऑपरेटिव कोन तांकर मेन काम होची फिश रो प्रोडक्शन केमती कमेबे फिश रो मार्केटिंग केमती भल से करिवे मार्केटिंग करिवे जेमती बेसी रु बेसी बिजनेस हबो कोस्टल एरिया जो लोक माने जेमती समस्त काम पाउथिबे बिजनेस करि पारुथिबे तांकर काहरे माने गरीबी न रहिबो तो सेही जिंस को से माने आखि आगे रखी सब स्टेप्स नियंती types of fisheries cooperatives एटा निजे पढि दबो so there are various types of cooperative producer cooperative society primarily aims to promote common ownership and management of goods and production okay तो producer cooperative रो काम कोन से माने देखिबे कि माने को प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हेबे इन द एक्वाकल्चर प्रोसेस देन स्टोरेज कोऑपरेटिव सोसाइटी ए माने मेनली फिश रो स्टोरेज को तांको स्टोरेज केमदी भल से हबो ताकू मेन ऑब्जेक्टिव होची तांकर सेटा स्टोरेज कोऑपरेटिव सोसाइटी रो सो आफ्टर द फिश हार्वेस्टेड दे हैव टू स्टोर से माने स्टोर करी कि ताकू बिकिबे तो तार स्टोरेज ऊपर से माने बेसी तांकर कंसर्न थाए देन फिश कंज्यूमर सोसाइटी so members from the lower and middle class run consumer store where fish are purchased at a wholesale rate and are sold at a low market तो एगरा सब निजे पढि दबो marketing cooperative society रो involvement होची in marketing transport okay insurance cooperative society कि aquaculture करिवा को चाहूची insurance तांकर इंश्योरेंस हबो तो इंश्योरेंस काम इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी किछि किछि कोऑपरेटिव सोसाइटी अछंती से माने लोन देबारे हेल्प करंती काहा को लोन देबे जे एक्वाकल्चर करिया को चाहूची ओके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव एडा पढि दबो बुझी परिबो किछि नाही या भितरे so there are three types of fisheries cooperatives like first is primary cooperative which occurs in the village level जोटा गां रे ही हुए village level fishermen are the member सेतरे member किए fisherman माने रहिबे local fisherman माने तार member तांगर काम कोन तांग फंक्शन होची सोशियो इकोनॉमिक देखो टेबल नंबर 12.2 ओके ए जो फिशरीज कोऑपरेटिव 3 टाइप रो हला प्राइमरी
regional and apex। तो फास्ट तीन ताको टेक्स्ट रे अछि देन टेबल रे अछि तमु टेबल टाको जाओ तांकर काम कोन सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंबर्स credit and supplies both work related and domestic marketing of fish। तो जनरली से माने गां लेवल ए जो प्राइमरी कोऑपरेटिव से माने कोठी काम करंती विलेज लेवल रे काम करंती तांकर मेन मेंबर किए फिशरमैन माने। तो सेमानकर मेन काम होची सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द फिशरमैन डेवलपमेंट ऑफ फिशरमैन। ओके केमिति सेमान डेवलपमेंट करिवे बाय डोमेस्टिक एंड मार्केटिंग ऑफ द फिश डोमेस्टिकेशन एंड मार्केटिंग ऑफ द फिश। देन रीजनल कोऑपरेटिव कोठी अछि माने डिस्ट्रिक्ट लेवल रे एटा गां लेवल रे न थाई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल रे रहउची। ओके तो एथरे को माने मेंबर रहबे इट कॉन्स्टिट्यूट्स फिशरमैन और प्राइमरी कोऑपरेटिव्स। ओके फिशरमैन को नै कि ही तयारी should serve as a link between primary and apex cooperative। सेटा गोटे इन बिटवीन रहिला प्राइमरी मेनली प्रोडक्शन टा कोठी होची विलेज एरिया रे होची सिटी एरिया रे बेसी एगुडा एक्वाकल्चर हुएनी कोठी विलेज एरिया रे। तो रीजनल कोऑपरेटिव जोटा कि डिस्ट्रिक्ट एरिया रे थाए से माने कहा भितर ये फॉर्मेशन करंती दे फॉर्म्स ए लिंक बिटवीन द प्राइमरी एंड apex cooperative। ओके थर्ड इज apex cooperative which occurs in state or national level। स्टेट और नेशनल लेवल रे थाए। ओके तांकर काम कोन प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड बिजनेस से माने बिजनेस को केमती बढ़ाइबे एक्वाकल्चर से माने तांकर मेन होची सेया मेन ऑब्जेक्टिव होची सेटा सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ स्कीम्स जो जो स्कीम सब अछि जेमती एक्वाकल्चर करिया पई सब स्कीम अछि गवर्नमेंट स्कीम दोची लोन दोची लोक को तार भी केमती से लोकन को जाय सेटा पहुंचेबे सेटा भी तांकर ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रिसोर्स कोठी आसीबो सेई विषय से माने नेसेसरी इनपुट्स गाइडेंस गाइड करिवे काहा को प्राइमरी कोऑपरेटिव को गाइड करिवे सो दैट देयर विल बी मोर प्रोडक्शन इन द विलेज लेवल। तो फिशरीज कोऑपरेटिव रो काम कोन फर्स्ट होची वेलफेयर ऑफ फिशर्स जो माने फिशर अछंती तांको तांकर वेलफेयर तांकर भलो करिवे एक्वाकल्चर प्रमोशन एक्वाकल्चर को प्रमोट करिवे जा फल बेसी टू बेसी एक्वाकल्चर हबो आउ ओवर जो एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन न प्रोटीन नीड हेई परिबो। देन कोल्ड चेन क्रिएशन देन मार्केटिंग ट्रेडिंग एंड एजुकेशन तार मार्केटिंग करिवे लोकन को ट्रेड करिवे एजुकेट करिवे अबाउट द एक्वाकल्चर प्रोसेस इंटरनेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करिवे जा फल रे फिश एक्सपोर्ट हेई परथो बाहर को। ओके सर्विस टू मेंबर इंस्टीट्यूशन सो एई सब काम होची कहारो कोऑपरेटिव सोसाइटी फिशरीज कोऑपरेटिव रो काम होची ए सब। 12 सरला नेबे 12 यूनिट। Next, coming to the aquaculture and environment. So, how the aquaculture and environment they are related. Okay. So, if you are doing aquaculture, is it affecting the environment? Environment को affect करूची कि नहीं? हम तो aquaculture process करूचे, हमारा revenue generate होची, but is it having any negative impact on environment or not? Obviously, it is having some negative impact on the environment, like impact on the physical resource। physical resource माने एटी soil हैला water हैला जो एरिया में pond बने की aquaculture करूचे सही तार soil quality water quality deteriorate होची by the aquaculture process। aquaculture fish मानको जो waste product आसी माटी रे मिसुची ए पानी रे मिसुची माटी रे मिसुची तो पानी रो क्वालिटी सेठी खराब होची माटी रो क्वालिटी खराब होची तो water resource को से harm करूची। Okay, so this is the intensive aquaculture versus environment। So how the aquaculture it impacts the environment like the physical resource आमे एठी जेति कि टेक्स्ट अछि आमे ए टेबल रे भी सेति कि जिंस ही अछि ए टेबल टा को मु एक्सप्लेन करछि टेक्स्ट रे बस आउ टिके टिके बडै बडै से लिखिछि। तो फिजिकल रिसोर्स लाइक कोन वाटर आउ लैंड। ओके तो जो जगह रे आमे aquaculture करूचे सेही जगह रो लैंड को अफेक्ट करूची आउ से जगह रो वाटर को अफेक्ट करूची कोन aquaculture लैंड को केमिति अफेक्ट करूची। ओके सैलिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स
and fresh water, conversion of mangroves, conversion of agricultural lands, changes in the property of soil, soil ର property change ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି pond system କରୁଛେ ସେଠି agriculture କୁ ଆମେ loss କରୁଛେ, ଆମେ ସେଠି agriculture କରୁନେ, okay, conversion of mangrove, salinization, salinity of the soil increases, okay, ତ ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି land ର effect on the land. Then effect on water, ଯେତେବେଳେ water ରେ ଆମେ aquaculture କରୁଛେ water quality ବି loss ହଉଛି, ତାର oxygen dissolve oxygen କମି ଯାଉଛି, pH change ହେଇଯାଉଛି, okay, so water ଉପରେ କଣ କଣ ତାର impact ରହୁଛି, eutrophication, eutrophication ଶୁଣିଛ, ଯେତେବେଳେ nutrient level ବଢିଯାଏ water ରେ ସେଠି algal bloom ହୁଏ, algal bloom ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲାଇଟ୍ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରନି ପାଣି ଭିତରକୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଣିରେ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି they will die, that process is known as eutrophication. Then ଆଉ ପାଣିକୁ କେମିତି affect କରୁଛି, growth of harmful species, କିଛି କିଛି harmful micro organism ସେଠି grow କରନ୍ତି, release of different toxins and gases into the water, water ku different toxin ଆଉ gases release ହଉଛି, changes in the community structure, community structure ମାନେ pond ର ଯୋଉ community structure ରେ change ଆସିବ, so this is the physical, this is the harm to the physical resource. Then biological resource କୁ କେମିତି ସେ affect କରୁଛି, mainly the biodiversity, so it changes the genetic resource, okay, genetic resource କୁ change କରୁଛି, introduction of pathogen, various type ର pathogen ପାଣି ରେ grow କରିବେ ଯଦି ଆମେ aquaculture କରିବା, କାହିଁକି aquaculture କଲେ fish ର ଯୋଉ waste material ବାହାରିବ ସେ waste material water ରେ ଯାଉଛି, ତ ସେଇ waste material କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସେଠି various types of micro organism grow କରିବେ, okay, ତ ପାଣିର biological property of the water is also changing, okay, then susceptibility to disease also increases, okay, now the fishes on the ଗୋଟେ area ରେ ଯୋଉଠି aquaculture ହଉଛି, as the water is polluted, so people will become more susceptible to the disease, ତାଙ୍କୁ disease ବହୁତ easily ହବ. Then what are the socio-economic impact, socio-economic impact କଣ, economics ରେ କଣ impact ହଉଛି ଆଉ society ରେ କଣ impact ହଉଛି, okay, ତ positive impact କଣ ହଉଛି, positive impact ଏଇଆ କି ହଉଛି କି ସେ employment ଦଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, okay, ଯୋଉଥିରେ economic growth ହଉଛି, social growth ହଉଛି, okay, କିନ୍ତୁ negative impact କଣ ରହୁଛି, land use conflicts, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ land ର use ପାଇଁ conflict ହଉଛି, ଲୋକ ଭିତରେ society ଭିତରେ, okay, then social stratification, loss of cultural and ethical values, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ socio economic impact ପକଉଛି agriculture on the environment. ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ସେଟା ଏବେ text ରେ ଅଛି, okay, changes in the property of soil, conversion of agricultural land, then impact on biological resource, okay, wild fish production ହଉଛି, alien species formation ହଉଛି, alien species ମାନେ କିଛି କିଛି ନୂଆ species ଆସିକି ସେଠି accumulate ହଉଛନ୍ତି, different types of disease ହଉଛି, parasitic disease, bacterial disease, fungal disease, viral disease fish କୁ ହଉଛି, okay, then socio-economic resource, socio-economic impact କଣ, land use conflict ହଉଛି, social stratification ହଉଛି, employment opportunity and economic status, employment opportunity ଦଉଛି, that is a positive value, positive hmm, positive impact of this aquaculture. Then coming to environmental impact assessment, so environmental impact assessment is a process whereby the potential impacts of an aquaculture proposal on the social, biological, and chemical and physical environment are assessed and justified. So it is generally कौन करती कि आमे जितने गोटे एक्वाकल्चर स्टार्ट करूचे से एक्वाकल्चर रे कौन तार सोशल इफेक्ट रहिबो, कौन फिजिकल इफेक्ट रहिबो, कौन बायोलॉजिकल इफेक्ट रहिबो, कौन केमिकल इफेक्ट रहिबो, तो ताकू आमे स्टडी करूचे आ सेटा को केमती कमेइबा ता अगेंस्ट रे आमे किछि स्टेप्स नउचे, किछि जस्टिफाइड स्टेप नउचे, तो सेटा होची एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, आमे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को केमिति कमेइबा, माने जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वेरियस टाइप्स रे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होची फॉर द एक्वाकल्चर प्रोसेस
आम तार आसेसमेंट केमती करबा ताको कमेइबा केमती ओके सो EIA कौन EI रो ऑब्जेक्टिव होची टू प्रमोट एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ ओके एनवायरनमेंट फ्रेंडली जेमती एक्वाकल्चर हबो सेटा को देखिबा कि काहाकू तार बैड इंपैक्ट बेसी सोसाइटी की इकोनॉमिक्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऊपर न पड़ू टू प्रेडिक्ट एंड इवैल्यूएट इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक्स इफेक्ट तार किछि इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट न पड़ू किछि सोसाइटी ऊपर टू प्रोवाइड डिटेल्स फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज तार कौन कौन इफेक्ट रहइबो एनवायरमेंट ऊपर ताकू भी हमें नजर रखिबा ओके हम नजर रखिबा माने को मान नजर रखिबे एनवायरमेंटल impact assessment okay to identify or to identify legitimate options and malignant measures okay तो कौन कौन सब सेठी ऑप्शन अछि कौन कौन सब माने डिजीज हला कि तार बैड इंपैक्ट कौन अछि आ ताकू हमें केमिति मेजर नेबा माने ताकू कंट्रोल करिया पे हमें कौन कौन स्टेप्स नेबा एटा होची ऑब्जेक्टिव ऑफ EIA okay एवढा होची डिफरेंट प्रोसीड्यूर स्टेप्स फॉर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बहुत इजी अछि ता टेक्स्ट गुडा पढी दबो हला okay next coming to the environmental management for sustainable agriculture so how will go for the sustainable word ro meaning तो माने जानिचो तो sustainable agriculture करिया पई हमकु केमिति मैनेजमेंट करिया को पड़ियो so agriculture must be planned and assessed in the context of national development policy and goals जेमती national development हेई परिबो पूरा state and nation development हेई परिबो सेटा हमें चिंता करिवा that is the sustainable development agriculture then physical and biological environment को हमें देखिबा ओके नेशनल डेवलपमेंट को देखिबा फिजिकल बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जेमती हार्म न होबो सेटा भी देखिबा हमें ओके सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी देखिया को पड़िबो ओके कैपेसिटी फॉर इंटीग्रेशन विथ एक्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल रिसोर्स यूज तो एई चारटा जिंस को आखिरे रखी कि आमे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आमे करू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर माने कोन एई चारटा जिंस जेमती हार्म न होउथबो सेटा होची सस्टेनेबल एग्रीकल्चर okay so there is a aquaculture authority bill okay the union ministry of agriculture ସେମାନେ ଗୋଟେ aquaculture authority bill ବନେଇଛନ୍ତି bill pass ହେଇଛି which is made by the union ministry of agriculture government of india has established a statutory body for regulating the activities connected with the aquaculture in the coastal areas and the matters connected therewith or incidental thereof okay so ସେମାନେ ଗୋଟେ body ବନେଇଛନ୍ତି ସେ body ହଉଛି aquaculture authority bill କିଏ ବନେଇଛି union ministry of agriculture government of india okay तो तार मेन काम कौन से aquaculture केते होची केते प्रोडक्शन होची प्रोडक्शन केमिति इंक्रीज हबो से सब को से रेगुलेट करूची किए aquaculture authority bill okay so this aquaculture authority bill was constituted under section 3 of the environment protection act 1986 okay तो एटा कहा भितरे जाउची एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रो गोटे सेक्शन सेटा कोटा aquaculture authority bill so in 2005 the bill was enacted as the coastal agricultural authority act 2005 तो फास्ट एटा कोन आछला coastal agricultural authority act 2005 that mandates the GOI, Government of India, to take all measures that are necessary for regulation of coastal agriculture. तो coastal agriculture रो regulate करिवो केमिति प्रोडक्शन अधिक हबो आ लो कॉस्ट रे प्रोडक्शन हबो से सब को रेगुलेट करिवो कि aquaculture authority bill तो एई coastal aquaculture authority bill रो काम कोन so here the chairperson who is the judge of a high court रो judge से तार chairperson
one expert member from the field, ମାନେ coastal aquaculture field ରୁ ଜଣେ ସେଥିରେ member ଥିବ, ଆଉ chairperson ସେଥିରେ କିଏ, judge of high court, then one member from the Ministry of Environment and Forest, Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce and Central Government. Okay, two members to represent the coastal states, one member secretary. तो एई माने सोचनी तार member कहार aquaculture authority bill रो member एई माने. Okay, power and function of the authority. So authority रो power of function कौन, to prescribe regulations for the construction and operation of aquaculture. से माने जो रेगुलेशन aquaculture construction हबो आउ तार जो बिजनेस हबो कौन कौन रेगुलेशन यूज करिकी से माने ये करिवो सेटा को किए प्रेस्क्राइब करे ये aquaculture authority bill. ସିଏ ହିଁ रूल रेगुलेशन बाहर करिवो कि एई रूल रेगुलेशन फॉलो करिकी aquaculture process हबो. To inspect aquaculture farms with a view to ascertain their environmental impact caused by the aquaculture. ସେମାନେ ଏଟା ବି ରେଗୁଲେଟ କରିବେ କି ବହୁତ କମ ରୁ କମ impact ହବ aquaculture on the environment. To grant license to the aquaculture farms. So aquaculture जो farmer माने अछंती तांको लाइसेंस दबो कि ସେମାନେ aquaculture करि परिबे. एटा काहर काम, aquaculture authority bill रो काम. To order removal or demolition of any aquaculture farm which is causing pollution. जदि को एरिया रे को aquaculture बेसी pollution करूची तो aquaculture authority bill ताको ऑर्डर दे परिबो कि तमे संगे संगे ए aquaculture field ताको बंद करो. सेति भी तारो पावर अछि. आउ तारो कोन पावर, perform such other function as may be present. आउ तारो other function जेमिति कि सब को जगह रे माने other effect किछि देखौची, लोक मान को प्रॉब्लम होची कि किछि सोशल इशू रहूची तो सेटा को भी देखि कि से तार पावर अछि कि से aquaculture सिस्टम टा को पूरा बंद ही कर दबो. Next is Coastal Zone Regulation Act. So Coastal Zone Regulation Act, it is came in 19 so this government of India has notified the protection of coastal zone under the Environment Protection Act 1986 under the rule 5 of 3 of Environment Protection Rule 1986. Okay, so it a Coastal Zone Regulation Act का under आसी rule 5 of Environment Protection Act 1986. So this notification declares coastal stretches as the coastal regulation zone which regulates the activities in the coastal area. Coastal area रे से तारो जो fish production, fish marketing ताको से regulate करूची. Okay. Coastal regulation zone, it is classified into various types. Category 1, category 2, category 3, category 4 एगुडा पढी दबो सब. Okay, so the regulation activities of coastal regulatory zone कौन से regulate करूची? No new construction or developmental activities within 500 meter of the जो एरिया रे aquaculture होची तार 500 मीटर जाए जेमति किछि अलगा कंस्ट्रक्शन काम न हबो. Okay, then এই सब डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करची के सीआरजी कोस्टल रेगुलेशन जोन. पढिबो अछि जा डाउट हो पचारिबो. 13 13 सर लगी. ए यूनिट गुडा एक्चुअली किछि नाही 13 14 15 इट इज कंप्लीटली ता भितरे किछि नाही तुमको जस्ट रीडिंग मार देले ही तुम एग्जाम रे लिखि परिबो. ओके, नेक्स्ट इज aquaculture extension. टिके 2 मिनिट्स मते दियो मु टिके पानी पिए.
Okay, so coming to the aquaculture extension, extension per se is an applied science based on psychology and social settings of the farmers for imparting or inculcation of innovation of building capacity of species of the people for sustainable improvement of the life quality. Okay, in other words, it is a process of working with the people by means of education to put working knowledge of technology for improving economic and social condition. Okay, तो extension कौन aquaculture extension कौन एठी आमे लोक मानकु आमे knowledge देबा proper working knowledge. ओके जो माने सब aquaculture रे काम करछन जो लेबरर मानकर सेति लेबरर मानकर सेतिकी नॉलेज न थाए अबाउट द aquaculture फूड केमिति फूड रे कोन दिया जिवो तांकर को एंटीबायोटिक डिजीज हेले को एंटी तो सेमान को कोनोसी नॉलेज न थाए तो आमे केमिति समस्त को नॉलेज देबा टू टू डेवलप दिस aquaculture process आमे डिफरेंट टेक्नोलॉजी तांको केमिति जणेबा सो दैट देयर विल बी मोर सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ दिस aquaculture. Therefore aquaculture extension is a sectional education system. So it is a education system that assists the transfer of knowledge with the aim to promote the aquaculture. Okay, तो जेतिकी गोटे माने लेट साइंटिस्ट जेतिकी नॉलेज अछि about the process of aquaculture से केमती अन्य मानकु से नॉलेज ता देले there will be more production of the fish by the aquaculture process. तो ई aquaculture extension रो main objective कोन to transfer the knowledge of to transfer knowledge of technology को टेक्नोलॉजी रे हमें जो जो टेक्नोलॉजी हमें aquaculture रे यूज करछे से टेक्नोलॉजी को से टेक्नोलॉजी रो नॉलेज को ट्रांसफर करिवो सच एज साइट सर्वे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन पॉन्ड केमती कंस्ट्रक्शन हबो कल्चर टेक्निक डिजीज डायग्नोसिस वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट तो एई सबु नॉलेज को केमती हमें बहुत स्प्रेड करि परिबा सो दैट देयर विल बी मोर aquaculture. तो मारो मेजर objective of aquaculture extension is to transfer the knowledge for the of the technology. Next, to link the farmers with the support service. ओके फार्मर मान जो माने सब aquaculture फार्मिंग करूचंदी से मान को डायरेक्टली सपोर्ट सर्विस सहित लिंक करिवे बाय एन्श्योरिंग सप्लाई ऑफ क्वालिटी फर्टिलाइजर्स फीड ड्रग्स एंड सीड्स माने जो फार्मर माने aquaculture करूचंदी से माने भी सेति की ट्रेन नुह तो ताकू आमे जो फूड देबा तांकू जो डिफरेंट टाइप्स रो एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन्स डिसइनफेक्टेंट ताकू आमे सप्लाई करिवा सेही सब नॉलेज भी आमे तांकू देबा कि केते अमाउंट रो डिसइनफेक्टेंट स्प्रे करिया दरकार केते अमाउंट रो एंटीबायोटिक खाइबा दरकार केते अमाउंट रो एंटीबायोटिक हमकु पानी रे स्प्रे करिया दरकार तो से सब नॉलेज भी हमें फार्मर मानकु देबा थ्रू दिस एक्सटेंशन सिस्टम आउ कोन तार मेन ऑब्जेक्टिव टू लिंक द फार्मर्स विथ द क्रेडिट फैसिलिटीज by arranging short term and long term loans from the financing agencies. Okay, जो फार्मर माने एक्वाकल्चर करूचंदी they are not financially that strong तो से माने से लोन नै के ही करंती तो एक्सटेंशन एक्वाकल्चर एक्सटेंशन रा काम कोन से माने तार एम कोन से फार्मर मानको को केमती अधिक रु अधिक लोन मिल परिबो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एजेंसी सेटा को से माने आखि आगरे रखंदी आउ कोन टू एन्श्योर to create marketing and distribution system. Okay, farmer माने जले फार्मिंग कला पर हार्वेस्ट परे ओके फार्मर माने जानी परंतनी कि तांको को मार्केट रे केमिति मार्केट चेन से माने सप्लाई करबे सो सेटा को भी केस एक्सटेंशन सिस्टम ही ताको से रेगुलेट करे कि केमिति हां अधिक रु अधिक मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हेई परिबो काहर फीस रो बाय organizing cooperative trading facilities marketing consumer education and product development. Next are our objective kono to train the farmers in aquaculture technique farmer manku aquaculture technique train karibe so that there will be more production in the aquaculture system. So aquaculture extension system in India. So India रे कोन aquaculture extension system अछि
आउ माने को ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छी जो माने aquaculture एक्सटेंशन प्रोवाइड करछनी माने फार्मर मान को नॉलेज दोचंदी फार्म केमिति तार ट्रेड बढ़िबो केमिति मार्केट तार बढ़िबो केमिति डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िबो सेटा को से माने करंती मार्केट माने केमिति सॉरी फार्मर माने केमिति लोन पाई परिबे सेटा को भी कंट्रोल करंती तो इंडिया रे कोन कोन सब अछि सो इंडिया रे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम अछि okay so the recommendations of the working group on 55 years plan on research training and extension focused on the attention of government तो जो एई एक्सटेंशन यूनिट रो को माने रुहंती मोस्ट एक्सपीरियंस लोक माने जो मानकर ऑलरेडी एक्सपीरियंस अच्छी ऑन द एक्वाकल्चर प्रोसेस सेही मानकु ही एठी रखिथानी जो माने कि नॉलेज दियंती फार्मर मानकु हाउ टू डू द एक्वाकल्चर सो ताकर मेन ये कोन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर इनलैंड एंड मेराइन फिशरीज तो माने फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर खोलिबे इंडिया रे जति कि फर्स्ट से माने कोन ट्रेनिंग सेंटर खोलजों जा फल रे एक्वाकल्चर ऊपर से माने ट्रेनिंग दे परिबे लोकन को नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड एक्सटेंशन लिटरेचर सपोर्ट टू द स्टेट लेवल एक्सटेंशन यूनिट से माने इक्विपमेंट सब जहां भी यूज होची एग्रीकल्चर प्रोसेस रे से विषय नॉलेज दोचंती स्टार्टिंग ऑफ फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज ओके तो फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी केमिति फिश फार्मर गोटे एजेंसी बनेबे जो माने कि फिश फार्मर रो डेवलपमेंट करिवे से एजेंसीज भी बनौचंती को माने aquaculture extension system ओके सो एगुडा होची कहार काम aquaculture extension system in India history of extension in agriculture एटा पढी दबो केते बेले फास्ट एटा स्टार्ट हेतला history of this extension agriculture okay ओके तो ये सब यूनिट जो एक्सटेंशन एक्वाकल्चर सिस्टम रो मेन एक्टिविटीज कौन रोची फर्स्ट इज सर्वे ऑफ कल्टिवेबल वाटर एरिया ओके से माने फर्स्ट सर्वे करिवे गोटे पर्टिकुलर एरिया रे को वाटर से माने एक्वाकल्चर करि परिवे ऑल वाटर आर नॉट लाइक दे आर गुड फॉर द एक्वाकल्चर प्रोसेस सो से माने फर्स्ट सर्वे करिवे कल्टिवेबल वाटर एरिया एंड कल्टिवेबल लैंड देन करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द पॉन्ड पॉन्ड रो करेक्शन और इंप्रूवमेंट करिवे पॉन्ड रे केमती बेसी ग्रोथ हेई परिबो फिश रो सेही ताकू आखि आगर करिके से माने पॉन्ड को इंप्रूव करिवे लोकेशन ऑफ फिश सीड कलेक्शन सेंटर फ्रॉम फिश सीड जो कलेक्ट करूचंती फिश सीड माने जो अंडा जोठे हमें माने पॉन्ड रे छाडू सेटा कोठु कलेक्ट करिवे सेटा भी डिसाइड करिवो किए एई सिस्टम ओके डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स सो लोकों को इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक हमें जो पढिले आगरु सब तांको से डेमोन्स्ट्रेट करे कि देखैबे केमिति केमिति सब इंड्यूस्ड ब्रीडिंग हेई परिवो जहा फल प्रोडक्शन बढ़िवो नर्सरी पॉन्ड मैनेजमेंट करिवे ओके वीड कंट्रोल जति अननेसेसरी सब प्लांट्स ग्रो करूचंदी एक्वाकल्चर फील्ड रे ताकू कंट्रोल करिवे ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश सीड एंड ब्रीडर्स ओके अरेंजिंग शॉर्ट टर्म कोर्स करिकि लोकन को से माने नॉलेज देबे अबाउट द एक्वाकल्चर प्रोसेस अरेंजिंग exhibitions and farmer fairs exhibition आउ फेयर सब लगे कि फार्मर मानक से माने बुझाई परिबे केमिति से माने को प्रोसेस एक्वाकल्चर करले तांकर प्रोडक्टिविटी बेसी हबो और हार्वेस्टिंग बेसी हबो तो एई सब काम होची कार एक्वाकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम रो एई सब काम इन इंडिया प्रेजेंट नेटवर्क ऑफ एक्सटेंशन सर्विस इन एक्वाकल्चर कौन कौन सब नेटवर्क रही सो फर्स्ट इज एक्वाकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया माने पूरा सेंटर इंडिया रो फर्स्ट एक्वाकल्चर extension system then it will come to the state okay state को आसीबो then district रो village तो एई भला so aquaculture extension system in India it is categorized into two organized and unorganized okay organized again public extension private extension public undertaking private undertaking okay public sector माने that is 50% government and 50% public and private extension माने it is completely private माने से माने aquaculture process करिके केमिति से माने बेनिफिट हेई परिबे सेमिति अनऑर्गेनाइज्ड रे आसुची प्रोग्रेसिव फार्मर्स ओके मार्केटिंग एजेंट्स नीड बेस्ड एक्टिविटीज ए सब आसुची अनऑर्गेनाइज्ड रे ओके तो ऑर्गेनाइज्ड रे दीटा सेक्टर एटी काम करचंदी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ओके
पब्लिक सेक्टर रे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एगुड़ा सब मिसिकी से माने लोकंकटू किछि शेयर नै पब्लिक सेक्टर माने तुम माने जानिଛ पीएसयू जोड़ा कह जाए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थरे गवर्नमेंट रो शेयर थाए और पब्लिक रो शेयर थाए गवर्नमेंट पब्लिक रो शेयर 51% है गवर्नमेंट रो शेयर 49%। तो इंडिया रे जो ए सब अच्छी एक्सटेंशन सर्विस ओके सेटा दीटा ये डिवाइड हेची पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर माने कंप्लीटली प्राइवेट कंपनीज माने ताको ओन करूचंदी और पब्लिक सेक्टर जो थरे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रो शेयर रहउची विथ द पब्लिक। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल रे कौन सब एजेंसीज रहउची सो फर्स्ट इज फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी एफएफडीए ओके एटा को कहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल रहउची यार काम कोन ये फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी माने फिश फार्मर रो डेवलपमेंट पिछरे देखिबो केमिति से माने प्रॉपर्ली फीड करिवे तांकू नॉलेज दबो अबाउट द एग्रीकल्चर केमिति से माने लोन नै परिबो ताकू से जिंस को भी ट्रैक करिवे ओके। So the government of India introduced the scheme of Fish Farmer Development Agency during the fifth 5 year of plan to develop inland tanks and ponds through the financial and technical support to the rural people। तो यार मेन एम होची कि हमें फाइनेंशियली और टेक्निकली माने एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी और एक्वाकल्चर पई फाइनेंस केमती रूरल पीपल मानू को देकी हमें एक्वाकल्चर को बढ़ेबा आउ फिश प्रोडक्शन को बढ़ेबा। तो तार मेन एम होची एटा कहार फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी व्हिच वर्क्स एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। सिमिलरली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर गोटे लैब अछि भुवनेश्वर जानिथिबो तो आईसीआर काम कोन ये भी से एग्रीकल्चर को मेंटेन करे एटा गोटे इंडिया रो एजेंसी। So ICR is the an autonomous body under government of India. It is तार भी सही सेम काम केमिति रूरल एरिया रे प्रॉपर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करि परिबे आ एक्वाकल्चर केमिति बढ़िबो प्रोडक्टिविटी केमिति बढ़िबो सो दैट देयर विल बी मोर रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द एक्वाकल्चर फील्ड। एक तो एक्वाकल्चर फील्ड रु रेवेन्यू जनरेट हबो दुरे मोर पीपल विल बी एम्प्लॉयड लोक मान को भी एठी जॉब मिलुची। Similarly, National Institute कौन आछि सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन जोटा कि अछि सीआईएफई भुवनेश्वर गोटे अछि जानिछ सिफा जोटी कि फिश एक्वाकल्चर करा होछि सिफा ता ना होछि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ओके। तो सेटा गोटे फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन ओडिशा रे अछि ता ना होछि सिफा भुवनेश्वर सुनिथिबो हैला। नेक्स्ट इज दिस Central Inland Capture Fisheries Research Institute which is present in the West Bengal. Then Central Marine Fisheries Research Institute present in Kerala. Central Institute of Freshwater Aquaculture SIFA that is present in Bhubaneswar Odisha okay। Central Institute of Brackish Water Aquaculture एगुड़ा different type of research institute which is present in different areas of our country that promotes the aquaculture research। aquaculture research को प्रमोट करचंदी केमिति नुआ नुआ टेक्नोलॉजी आनी कि से मेनली फिश ब्रीडिंग करचंदी ट्रांसजेनिक फिश करचंदी जहा फल रे हमर फिश प्रोडक्शन बढ़िबो। So there are various कृषि विज्ञान केंद्रस and training centers okay available in the state level जोटी कि लोक माने जाय कि ट्रेनिंग नै परिबे about the aquaculture and other agricultural processes। सेमते स्टेट लेवल ले कौन सब अछि नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक various non government institutions रहउची and various type of government institutions रहउची जो माने कि directly or indirectly they involve in the development of technology and development or more production of fish by the process of aquaculture okay। Different public sector groups like single window delivery system किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन ए सब कोन स्टेट सब ए सब जिंस रखि छी सो दैट हमें डायरेक्टली हेल्पलाइन कथा ही परिबा कि हमर एक्वाकल्चर यही प्रॉब्लम होची हमें कोन सब यार हमें प्रिवेंटिव मेजर्स कोन नै परिबा हमें सॉल्यूशन तार केमती कर परिबो। तो एई भलिया सब हेल्पलाइन सेंटर सब अछि किसान कॉल सेंटर अछि सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम एटी भी हमें कॉल करी कहि परिया प्रॉब्लम फार्म स्कूल
ओके देन इनिशिएटिव बाय द प्राइवेट सेक्टर कौन सब इनिशिएटिव नै एक्वा सर्विस सेंटर से माने खोलुचन सब वन स्टॉप एक्वा शॉप ओके एड़ा सब प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव प्राइवेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो माने एक्वाकल्चर कमर्शियल पार्ट को मेनली फोकस करछंती आईसीटी इनिशिएटिव्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी then so एगुड़ा सब different private sectors they are involved in this uh, process. So methods of extension of services in aquaculture को method रे हमें extension service देई परिवा personal contact ओके तो के जो ऑर्गेनाइजेशन गुड़ा सब बनउची रिसर्च सेंटर गुड़ा बनउची से माने केमिति एई जो इन्फॉर्मेशन गुड़ा पहुंचै परिवे काहा को फिशरमैन पाखु को फास्ट होची पर्सनल कांटेक्ट पर्सनली हमें फोन करिकि ताऊ कांटेक्ट करिवा कि एई प्रॉब्लम होची एटा होची तार सॉल्यूशन और हमें विजिट करबे हमें माने मेन से ऑर्गेनाइजेशन गुड़ा जोड़ा बनिची एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन से माने जो एरिया रे एक्वाकल्चर होची सेठी जाके विजिट करि परिवे ओके देन मोबाइल यूनिट्स एग्रीकल्चर इन एक्टिविटी व्हिच इज मेनली confined to the village तो विलेज एरिया रे मैं भी सेला विलेज एरिया रे जाई कि से माने सेठी विजिट करिकि से ट्रैक करि परिवे कि हमर एक्वाकल्चर प्रोसेस रे सेठी किछि माने प्रॉब्लम होउची कि नाही किछि प्रोडक्शन बढ़ुची कि नाही से सब को से माने ट्रैक करि परिवे सो दीज आर द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ द पीपल next is group contacts so these are personal contact हमें केमती करछे either visit करछे और through mobile phone हमें ताको contact करछे similarly group contact रे हमें केमती training देबा ताको training arrange करबा so that group ले लोक माने आसी की training नेबे demonstration देखेबा demonstrator माने practically हमें करी की ताको देखेबा कि एमती सब कले फिश रो प्रोडक्शन बढ़िबो हेलो हेलो क्लास नउची क्लास आज्ञा मैम ओके देन आमे आउ कोन करबा एग्जीबिशन करि परिबा एग्जीबिशन लगे कि जो एग्जीबिशन सब हुए ओके सेमिति एक्सटेंशन लिटरेचर करि परिबा ऑडियो विजुअल एड्स आमे ताको ऑडियो वीडियो देखै कि परिबा कि एई थ्रो रे तुम माने प्रोडक्टिविटी बढ़ै परिबो रेडियो टीवी टॉक्स रेडियो रे टीवी रे टॉक दे कि आमे लोकन को भी प्रमोट करि परिबा फॉर द एक्वाकल्चर फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द एक्वाकल्चर आमे स्ट्रीट प्लेस करि परिबा पपेट शोज माने खेलना शो करके आमे देखै परिबा कि केमिति आमे एक्वाकल्चर रो प्रमोशन करबा बढ़ै परिबा extension education in fisheries the principle of extension education in fisheries are principle of inclusiveness principle of participation and flexibility principle of grassroots organization okay so there are several principle of extension education however we shall discuss here only some of the principles like principle of inclusiveness so these the interest and needs differ among the individual villages blocks and state along with the cultural difference so therefore there cannot be unicode programs but based on the needs interest tradition customs values and okay तो आमे एजुकेशन तांको सेमिति देबा अकॉर्डिंग टू द नीड ओके तो गोटे एरिया रे को फिश कल्टीवेशन होउची ओके तांको से ट्रेडिशन कोन से एरिया रो ट्रेडिशन कोन किछि किछि एरिया रे देख से माने गोटे से चाहिबेनी एक्वाकल्चर करिया पई ओके सो बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन विल like go for educating the people principle of participation and flexibility the extension work should be assigned in nature so that people will participate okay so a principle of participation and flexibility कोन आमे एजुकेशन एमती देबा कि there will be maximum participation of the this laborer or the fisherman in the fisheries process okay leadership principle of cooperation and democratic approach okay एगुडा सब निजे निजे पढिबो आ भितरे किछि नाही extension agency in fisheries extension education कौन सब agencies अछि what are the characteristics of an extension agent an extension agent is expected to assess each situation सब situation को से assess करि परथुबा दरकार an extension agent should have the quality to arouse people to recognize and realize the problems
So ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି visit କରିକି ତାଙ୍କର problem ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ agent ର କାମ। An extension agent primary role is to achieve a transformed behavioral change in the attitude and social organization. An extension agent should serve as a link between government and the mass. So public ଆଉ government ଭିତରେ ସେ extension agent ହେଉଛି ଗୋଟେ link। ତେଣୁ ସେ properly ଲୋକଙ୍କ ସହିତ communicate କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, properly ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଦରକାର, properly ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। Fishery education, fishery extension education in human resource development, linkages and coordination ଏଗୁଡ଼ା ପଢିଦବନି ଯେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। Next, coming to the next unit, that is prospects of aquaculture for future development. So what measures should you take to develop the aquaculture in the future? आउ कौन कौन आमे सब मेजर नेले हमरो aquaculture further आहुरी development हेई परिबो। Okay, so before we'll go to the prospect for the aquaculture development, we should first know what are the challenges in aquaculture। aquaculture कला टाइम रे कौन कौन सब problems होची। First होची environmental impact, environment and crops। Okay, तो environment safety को affect करची किए aquaculture करिया द्वारा हमर पानी रो क्वालिटी खराब होची, soil रो क्वालिटी खराब होची, तो environment safety को affect करची। Okay, improving fish breeds, improving productivity through genetic modification and enhancement has been successful in crops and livestock. In aquaculture, all the culture species are not domesticated or in contrast to the livestock and crops. Therefore, genetic depression due to breeding over the years has decreased. Okay, so breeding करिया फଳରେ कौन होची? Improving the fish breed. Fish breed improve करूचे आमे, but आमे जेहेतु genetics टा change करूचे fish रे genetics रे change करूचे breeding जेतले करूचे, so that can also have a harmful effect on the fish. तो fish ऊपर किसी harmful effect भी से करी पारे। Certification of seeds, though the most countries have achieved in producing adequate seeds, so before the seeds they will use, जति कि aquaculture जो माने करूचंदी से माने seed use करिया पूर्वरु they should take a certification, they should satisfy, they should take a certification to use that seeds। तांकु allow हेइथिया दरकारी कि सेमाने से seeds use करिबा। केही भी जाय कि aquaculture process करि परिबेनी, सेमाने properly सेमाने application लेखिबे, सेमाने grant हेले ही सेमाने aquaculture करि परिबे। तो सेमाने certification तांको पाखरे थिबा दरकार, तांको पाखरे knowledge थिबा दरकार to use the antibiotics and chemical, केते chemical केते antibiotic use हबो तार भी knowledge लोक मानक पाखे न थाए। So that is also one challenge of this fish agriculture। Then managing fish health को manage करिबा भी गोटे चैलेंज तांको पाई। फिश हेल्थ को मैनेज से करि पार नाहंती। ओके, आ केते एंटीबायोटिक केते केमिकल यूज होबो तार नॉलेज भी से माने जानि पार नाहंती। ओके, तो एई सब होची प्रॉब्लम इन द एक्वाकल्चर। तो एई प्रॉब्लम को आमे केमिति ओवरकम करिवा, सोशल अपडेटमेंट केमिति करिवा। फर्स्ट होची आमे लोकन को माने नॉलेज देबा, साइंस इन एक्वाकल्चर एक्वाकल्चर कम्युनिटी। ओके, the relevance of science in aquaculture community should be contextualized to needs of the farmer। Okay, imparting innovation in the technology based circumstances। Okay, तो आमे एग्रीकल्चर जो माने करूचंदी माने एक्वाकल्चर प्रोसेस करूचंदी फार्मर मानको फर्स्ट आमे टेक्नोलॉजी विषय तांकु जणैबा कि एई टेक्नोलॉजी यूज कले योर प्रोडक्शन विल बी मोर। ओके, देन एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरमेंट करिवा, वुमेन मानको बेसी इन्वॉल्व करिवा इन द एक्वाकल्चर प्रोसेस। देन एक्वाकल्चर इन द रूरल डेवलपमेंट, रूरल लोक मानकर डेवलपमेंट आमे करि परिबा बाय एक्वाकल्चर प्रोसेस। तांको एक्वाकल्चर आमे जदी करिया को अलाउ करिबा, सेमानकर गोटे इट सर्व एज ए बेस फॉर देयर इनकम सोर्स, सेमाने गोटे इनकम सोर्स पाई परिबे जहा फଳରେ रूरल एरिया रो डेवलपमेंट हेई परिबो। रूरल एरिया रे बेसी ए जो पॉन्ड ये सब कोठी बेसी मिला जाए रूरल एरिया रे, सिटी एरिया रे बेसी न थाए। तो आमे रूरल एरिया रो डेवलपमेंट
आमे एक्वाकल्चर लोक मानकु करेकी तांकु प्रॉपर एजुकेशन देकी एक्वाकल्चर करेकी आमे प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट करि परिबा आ लोक मानकु भी आमे इन्वॉल्व करि परिबा से माने किछि प्रॉफिट मा गेन करिया पई ओके देन क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्सेस टू रिसोर्स आमे लोकन को रिसोर्स एक्सेस करिया पई अलाउ करिबा क्रेडिट टू अपॉर्चुनिटी जा अपॉर्चुनिटी से मानु मिलुची दे शुड यूज दैट अपॉर्चुनिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एरा सब पढिबो ता भितरे अच्छी किछि किछि टेक्स्ट बुझी बारे पूरा इजी वर्ड रे अच्छी ओके देन टेक्निकल चैलेंज सब कोन होची ड्यूरिंग द एक्वाकल्चर सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स सस्टेनेबल रहुनी माने वाटर क्वालिटी सेम रहुनी देयर इज चेंज इन द वाटर क्वालिटी चेंज होची तारो पीएच चेंज होची न्यूट्रिएंट लेवल बढ़िया द्वारा यूट्रोफिकेशन होची आल्गी सेठी बढ़ी जाउचंदी ओके जा फल रे that leads to loss of biodiversity in the water system okay growth of aquaculture sector so the growing consciousness for the growth of aquaculture production through the improvement of techniques intensification and integrated fish farming and other developmental activities gives a promising future okay so ame आहुरी टेक्नोलॉजी रे ग्रोथ करिया दरके ग्रोथ इन द एक्वाकल्चर सेक्टर आमे केमति करि परिबा आमे टेक्नोलॉजी रे आहुरी डेवलपमेंट करि परिबा ओके इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग पई लोक माने को आमे कहि परिबा इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग करिया पई एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ओके जोटा कि फिश रो प्रोडक्शन को बढ़ाइबो से सब जिंस को आमे आखिया रखी ग्रोथ एक्वाकल्चर सेक्टर को रे डेवलपमेंट करि परिबा जेमिति कोन these several challenges that include meeting the demand for feed fertilizers and seeds in term of quality and quantity एटा गोटे चैलेंज तो केते आमे फूड देबा फीड्स मान फूड माने फिश माने केते डिमांड करचंदी केते आमे फर्टिलाइजर देबा केते आमे सीड्स देबा ओके सेटा होची सेटा जानि बाटा ही होची गोटे चैलेंज लोक माने ठीक रे जानि परनांदी आउ कोन चैलेंज ensuring food security and maintaining good quality of product रो क्वालिटी को ठीक रे मेंटेन करि पाउनांदी से माने increasing competition pressure of resource access by the users ओके तो बेसी फिशरमैन जदी बढ़ी गले गोटे एरिया रे तांको भितरे कंपटीशन होची टू एक्सेस द रिसोर्सेस देन सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग टेक्निक्स for integration in rural development program reduction of environmental impacts okay improvement of environment improvement को भी हमको देखिया पड़ियो post harvest challenge सब कोन होची low tariffs or fish or fishery products significantly lower than the agriculture generally कोन होची post harvest challenge रे किछि during the harvesting period some fishes are lost some fishes are like faulty approach फिशिंग टेक्निक ठीक नथिया द्वारा सब फिश को से माने हार्वेस्ट करि पारंती नै किछि फिश से पानी रे ही रहि जानती ओके तो ये सब होची पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंजेस aquaculture technology so what are the aquaculture technology are used first होची disease management हमें करिवा with proper interval we have to check whether the fishes are having any type of disease or not then we'll manage the disease by tracking the treatment measures control measures and preventive measures so disease manage the increasing concern of use of antibiotics and other chemicals for disease management has placed focused on natural environmental friendly compounds okay तो आमे एठी केते एंटीबायोटिक्स यूज होबो केते केमिकल यूज होबो इन द फील्ड आमे ताकू डिजीज मैनेजमेंट करि परिबा ओके देन योर रैश कल्चर सिस्टम फिश फीड ओके रैश कल्चर सिस्टम माने रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम माने पड़छि रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम पढितला हमें जो पानीटा बाहरिबो ताको हमें प्यूरिफाई करबा पुणी रिसाइकल करबा पानीटा को तो सेटा हमें करिया द्वारा हमर वाटर रिसोर्स कम यूज होबो ओके तो सेटा भी हमें करि परिया रैश कल्चर सिस्टम फिश फीड को भी हमें ध्यान रखी करिया पड़ियो फिश रे हमें तार फूड रो कंपोजिशन कोन रहइबो केते प्रोटीन रहइबो केते कार्बोहाइड्रेट रहइबो से फिश फूड रे हमें केते प्रोबायोटिक केते प्रीबायोटिक्स ऐड करबा सेटा को भी हमको मैनेज करिया को पड़ियो देन क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स एंड एम्ब्रियो माने हमें एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी को केमिति बढ़ाई परिबा ओके केमिति फास्ट डिजीज मैनेजमेंट करिबा
रास कल्चर करवा ताकि हमर बहुत कम वाटर रे हमें बेसी फिश प्रोडक्शन करि परिबा रास कल्चर द्वारा फिश फीड को मैनेज करवा केते प्रीबायोटिक्स केते प्रोबायोटिक्स केते हमें प्रोटीन देवा सेतिरे केते कार्बोहाइड्रेट ताकू कंट्रोल करवा देन क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स एंड एम्ब्रियोज एग आउ एम्ब्रियो को हमें बहुत दिन जाए क्रायो प्रिजर्व करी रखी परिबा क्रायो प्रिजर्वेशन इज प्रिजर्वेशन व्हाट 196 डिग्री सेल्सियस ओके तो क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा हमें एग आउ एम्ब्रियो को बहुत दिन जाए रखी परिबा स्टोर करिकी तो सेटा भी गोटे टेक्नोलॉजी हमें यूज करि परिबा इन द एक्वाकल्चर फील्ड देन स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर स्पीसीज हमें गोटे जगह रे मल्टीपल स्पीसीज को हमें एक्वाकल्चर करिवा that is known as diversification माने more species in a single pond or in a single aquaculture system okay सेटा भी हमें करि परिबा दिस इज a technology in the aquaculture then selective breeding करि परिबा selective breeding माने हमें दीटा superior character carrying fish को हमें सिलेक्ट करबा आ तांको भितरे ब्रीडिंग करबा सेटा कहै छै सिलेक्टिव ब्रीडिंग करिया द्वारा हमको फिश रे गोटे बेटर कैरेक्टर मिलिबो माने मेनली हमें काहा कोठी बेटर कैरेक्टर कहै छै प्रोडक्टिविटी तांको साइज बढ़िबो सो दैट फ्लेश क्वांटिटी बढ़िबो ओके तो एई सब टेक्नोलॉजी एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी यूज करके हमें फिश प्रोडक्शन को बढ़ाई परिबा सो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज रो रोल कोन in the fish aquaculture technique so promotion of mutual cooperative to prevent dispute जेंति किछि न हबो से cooperatives बनेबो transparency in the fish policy decision making transparency रहइबो जेंति fish policy making रे transparency in the improving data collection and scientific assessment okay scientific assessment और data collection को improve करिवो recognizing the contribution of aquaculture and fisheries in the food security of India रे fishery रो role केते fishery केते food demand को need करूची केते demand को satisfy करूची तारो data रखिबा recognizing small scale small sorry small scale and artisanal fisheries for the right to access resources strengthening the control and surveillance monitoring the implementation of policy जो policy होची ताकू माने डे बाय डे ताकू strengthen करिवा control करिवा monitor करिवा ओके तो एगुडा होची गवर्नमेंट पॉलिसी रो सब काम रोल ऑफ गवर्नमेंट रो रोल कोन इन द aquaculture process first the technology provide करिवा लोकन को लोन दबो to do the aquaculture properly ताकू टेक्नोलॉजी विषय नॉलेज दबो प्रॉपर सब कैंपेनिंग करिवो कैंपेनिंग देन योर सब लाइक एजुकेशन दबो अबाउट द aquaculture system इंटर रीजनल कोऑपरेशन माने स्टेट भितरे कोन सब कोऑपरेशन रहउची बिटवीन द स्टेट इंटर रीजनल माने बिटवीन द टू स्टेट दीटा स्टेट भितरे केमिति कोऑपरेशन रहिले हमर फिश बेसी प्रोडक्शन हे परिबो बेसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हे परिबो तो एरियाज ऑफ इंटर रीजनल कोऑपरेशन ता भितरे कोन आस्टी कोस्टल मैनेजमेंट फूड सिक्योरिटी मार्केटिंग एक्वा केमिकल यूज कोन सब एक्वा फील्ड रे केमिकल यूज हे परिबो प्रिवेंशन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज अलगा बाहर जो स्पीसीज नुवा स्पीसीज जेमति एक्वाकल्चर सिस्टम रे पसी न परिबो सेटा को प्रिवेंट करिवो कोस्टल मैनेजमेंट ओके रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज ओके बेसी फिश ऊपर रिसर्च करिके नुवा नुवा टेक्नोलॉजी बाहर करिवो गवर्नमेंट पॉलिसीज को मानी की करिवो गवर्नमेंट पॉलिसीज इट विल ओबे द गवर्नमेंट पॉलिसीज okay next is culture based fisheries so culture based fisheries can be defined as stock enhancement practices which is conducted in water bodies that are perennial or seasonal or those where water is retained for at least 6 to 8 months in a year and natural recruitment of seeds are not sufficient to sustain a fishery okay culture based fish कोन गोटे एरिया रे लेट 6 रु 8 मास जाए सेठी पानी भरी की रहउची
तो आमको सेठी पानी सप्लाई करिया दरकार नहीं, सेठी पानी भरिकी रहुची किंतु सेठी एनफ सीड नाही फॉर द एक्वाकल्चर। तो आमे कोन करिया सेही पर्टिकुलर जगह टाको आमे एक्वाकल्चर करिवा, माने हम पाखरे 6 to 8 मंथ जाय पानी सेठी अछि, आमे बे सीडिंग आमे जो अंडा छाड़िवा सेठी सेटाको कंट्रोल करिकी आमे बे सेठी एक्वाकल्चर करिवा। टाइप्स ऑफ सीबीबी प्रैक्टिस्ड, okay, sea ranching is a practice which is in which juvenile stage of fish are released into their natural environment, okay। एठी आमे juvenile fish को तार natural environment ए जो जोठी पानी एमती जमी अछि सेठी आमे छाडी देबा, जा फळे there will be growth। Next is coastal lagoon farming। Coastal lagoon farming कोन? Lagoon farming is a traditional practice in various regions across the Europe and other countries extensively and marginally in many other coastal areas. So here restocking of the coastal lagoon is carried out by natural anadromous fish। Anadromous fish माने कोन? जो fish माने migrate करंती from sea to fresh water। sea to fresh water जो fish migrate करंती तांको कह जाय anadromous fish, okay। काहे कि से माने migrate करंती for the purpose of either to get better food or to spawn or to lay egg। अंडा देबा पई से माने सी वाटर रो फ्रेश वाटर को मूव करंती। ओके, फ्लड प्लेन्स फिशरीज। फ्लड प्लेन फिशरीज कोन? आर seasonal activities carried out in the areas where there is excess accumulation of water। ओके, हमें सही टाइम रे करबा, को टाइम रे? केवल फ्लड टाइम रे। फ्लड टाइम रे बेसी वाटर जोठी accumulate हबो से एरिया रे हमें aquaculture करबा। सेटा कोन कहै जाय? सेटा सेति में सीजनल कहै जाय। फ्लड तो सब बेले आसेनी, केबे केबे फ्लड आसे, तो जो सीजन में फ्लड आसे हमें से फ्लड रो वाटर को यूज करके एक्वाकल्चर कर परिया, ता कहै जाय फ्लड प्लेन फिशरीज। स्टॉकिंग ऑफ इनलैंड वाटर्स। इनलैंड वाटर को हमें गोटे जगह रे स्टॉक करके रखी। इनलैंड वाटर माने फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर को हमें गोटे पर्टिकुलर जगह रे डिग करके स्टॉक करके हमें सेठी एक्वाकल्चर कर परिया। प्रैक्टिस इन इनलैंड कल्चर। प्रैक्टिस इनलैंड कल्चर हमें कौन कौन प्रैक्टिस करबा? एटा ऑलरेडी हमें फर्स्ट यूनिट रे पढीचे। कौन कौन हमें सब चेक करबा? वाटर रिटेंशन, डेप्थ ऑफ वाटर, आ वाटर रो क्वालिटी, ये सब हमें पढी देचे फर्स्ट यूनिट रे, ओके। सो फर्स्ट इज फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। कहारो? वाटर रो सिलेक्शन ऑफ वाटर। फर्स्ट हमें कोन वाटर सिलेक्शन करबा, पॉन्ड सिलेक्शन करबा, एरिया सिलेक्शन करबा। सो ऑलरेडी हमें एटा पढी सरचे यूनिट नंबर 1 रे। देन स्पीसीज सिलेक्शन करबा, को स्पीसीज हमें करबा, एटा को हमें प्रोसेस रे पढी सरचे ना फर्स्ट यूनिट रे, मने पडुची तो? Next is education, training and extension program to promote the aquaculture process. So what are different education extension service and extension work? What are different methods are like obeyed by the government to promote the aquaculture process? So first the extension of education, हमें लोगों को educate करेगा about the technology, about the fish food, about the breeding, about the transgenic fishes, okay, हमें तांको educate करेगा। We will let them know about the technology, जो technology से मैंने use करके fish रो production को बढ़ाई परिवे। So what are different marketing issues during the aquaculture? Aquaculture कौन कौन marketing issue? First होची perishable nature of the product। Unlike any other product, fish is highly perishable commodity। माने therefore the pressure to sell of the goods at the earliest prevents the good। माने कौन perishable माने कौन? easily fish टा कौन spoil ହେଇ ଯିବ, କାରଣ ସେଟା होची माने पानी रे रुहନ୍ତି, माने पानी रो हमें बाहर कले जेले मरि जाय, हमें डिफरेंट स्टेजेस तार पढिले आफ्टर डेथ कोन तार स्टेज होची, सो इजीली इट कैन स्पॉइल। तेनु हमर गोटे प्रेशर थाए कि जल्दी केमती फिश टा बिक्री हबो, तो पेरिसेबल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। तो जेटा इजीली स्पॉइल हे जाउची, तेनु तार मार्केटिंग इशू रहउची। तेनु जल्दी लोक चाहिबे कि जल्दी रु जल्दी केमती तार हमें टारगेट रे पहुंचेले
केमती बिक्री हे गले सरीबो देन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ओके तार स्टोरेज आउ प्रोसेसिंग रे इशू रहउची to for the fish to kept in consumable condition it is limited till the rigor motive मने पड़ची stage ओके तो आमे एटा गोटे चैलेंज कि फिश स्टोरेज आउ प्रोसेसिंग रे माने सेति कि हेई पारुनी that is one challenge in the marketing issue then transport facilities there are not proper transport facilities to transport these fishes from one place to another for the business purpose for selling purpose then marketing infrastructure and information सेतिकी भलो हमर इंफ्रास्ट्रक्चर नाही जहा थ्रो रे हमें फिश को गोटे जगह आ गोटे जगह ट्रांसपोर्ट करि परिबा देन मार्केट इनस्टेबिलिटी मार्केट इज इनस्टेबल मार्केट इज नॉट स्टेबल केबे केबे फिश रो रेट बढ़ी जिवो केबे केबे कमी जिवो so that is also harmful to the marketing that is also one marketing issue of aquaculture system okay then marketing policy measurement system एगुडा होची तारा ये तो नेक्स्ट कमिंग टू द फ्यूचर डेवलपमेंट आमे फ्यूचर डेवलपमेंट कोन कोन करि परिबा सो दैट again fish production will be there will be more increase in the productivity of the fish first ame कोन molecular technology in aquaculture molecular technology यूज करिबा जा फळे रे आमे फिश रो जीनोम को चेंज करि परिबो फिश रे गोटे नुवा जीन पुरै परिबा जोटा कि हमको गोटे बेटर कैरेक्टर दे परिबो ओके आमे वैक्सीन तांगु दे परिबा ओरल वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज कंट्रोल करिया पई आमे फिश को आगरु ही वैक्सीन दे देबा जा फळे तांको किछि डिजीज न होबो ड्यूरिंग द एक्वाकल्चर प्रोसेस मैडम जो वैक्सीन गुडा को दिया हबो फिश को केमिति छोटो जतळे होची माने तारो ये रे थिबे तारो जाळ जोडा देखो को कोन वैक्सीन दिस स्टेज के ना हाँ माने परे दियंती जाळ टाइम रे देई परिबो एडल्ट को भी देई परिबो ओके तो आमे ताको ओरली भी देई परिबा आ गोटे कोन पानी रे ही वैक्सीन छाडी देबा जो पानी रे से माने ग्रो हम पढैतिल ना सेते वैक्सीनेशन रे आइदर यस तांको आमे डायरेक्टली देई परिबा और पानी रे देई परिबा और आमे ताको इंजेक्शन देई परिबा तीनटा वे रे वैक्सीनेट करि परिबा तो वैक्सीनेट करिया द्वारा कोन हो डिजीज आमे तांको होबनी जा फळे रे प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड आ मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी सब यूज करी कि आमे तांको जेनेटिक्स की चेंज करी कि आमे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई परिबा ओके तांको पई आमे अल्टरनेटिव प्रोटीन जो फिश फूड रे आमे जो बेसी प्रोटीन सेडी दउचे ता पई अल्टरनेटिव प्रोटीन सब आनी में माने मे बी जो प्रोटीन आमे फीड करचे दैट विल बी पेरिस्ड डे बाय डे इन द मार्केट तो आमे अल्टरनेट प्रोटीन सोर्स भी खोजबा दरकार कि आउ फिश को आमे कोन फीड करिया द्वारा हमर प्रोटीन कंटेंट हमर फुलफिल हे परिबो ओके देन वी शुड गो फॉर द ओशियन एक्वाकल्चर जनरली ओशियन रे एक्वाकल्चर बेसी हेई पारेनी समुद्र रे हेई पारेनी कारण कोन ढेउ बेसी थाए इंटरटाइडल जोन रे हेई पारे तो आमे एमिति किछ टेक्नोलॉजी डेवलप करिया जेंति आमे ओशियन रे एक्वाकल्चर टाइप बेसी करि परिबा डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एक्वाकल्चर रोबोटिक्स ड्रोन्स आमे तब ए सब यूज करी कि आमे मैनेज करि परिबा तांकू कंट्रोल करि परिबा ओके ड्रोन यूज करी कि देखि परिबा फिश रो ग्रोथ केते होची फोटो सब नै की सो डिजिटल सिस्टम भी आमे यूज करि परिबा इन द फील्ड ऑफ एक्वाकल्चर 3D टेक्नोलॉजी ओके इंटरनेट ओके तो यही सब यूज करके हमें फीड एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ाई परिबा ओके सो डिस्टोरिंग टू इफेक्टिव मेकानिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो मैंने एटा पढ़ी दबो निजे ओके या भीतर किछि नाही जहाँ भी डाउट हो तुम पचारिबो फोन करिके ओके मो वॉइस आ खोलुनी मो तंटी पड़ी गलानी पूरा चिलिसिली ठीक अछि तुम माने आज बोधे लास्ट क्लास ही थिला तो मोर क्लास अब हबोनी सेति में मो आज आज लास्ट माने सबु जेतिक भी थिला हमर फर्स्ट ईयर आज आपनकर लास्ट सब पेपर मध्ये लास्ट सेति पई तो कंप्लीट कली आज सब लागि पथि बुझलो आ आज रो टॉपिक गुडा रे बेसी किछि नाही पूरा थ्योरी माने बुझिबार ही किछि नहीं नाही मैडम पढ़िले बुझी हबो सब जाना पड़छ किछि हम्म ये लागिवनी बाकी से मझिरो प्रीवियस केतेटा बुझी होनी बुझी नहले पढ़िया पई इंटरेस्ट लागो
ଯାହା ବୁଝି ନ ପାରିବ ଫୋନ କରି ପଚାରିବ ହେଲା। Yes, ma'am. ହୁଁ। କେତେ ଜଣ ଅଛ କ୍ଲାସ ରେ? 27 ଓକେ। ଠିକ ଅଛି। ଏନି ଅଦର କ୍ୱେରିଜ? No, ma'am, no. ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିवन। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର ଦ ଏକ୍ସାମ। Yes, ma'am. ଯାହା Thank you so much. ହୁଁ। Good night. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। Thank you, ma'am.